Hello everyone. Good morning. I mean, okay, good afternoon. Sorry. तो आजिर ए सेशन रे हमें कौन डिस्कस करिबा? आजिर ए सेशन रे ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स ता डिस्कस करिबा. ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स ता डिस्कस करिबा जहार ड्यूरेशन ता रहिबो 7th जुलाई रु 13th जुलाई जाए 2025 रो सुइटेबल फॉर बोथ ओएस एंड स्टेट एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जो रहउची. ठीक अछि. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग. तो ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स रे आज डिस्कस करिबा 7th जुलाई रु 13th जुलाई 2025 जाए ओडिशा रिलेटेड जते भी करंट अफेयर्स रही छी ए सप्ताह रे प्रीवियस वीक रे तो सेटा डिस्कस करिबा सुइटेबल फॉर बोथ ओएस एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स. आ प्रीवियस वीक रे जते बळे मु करंट अफेयर्स ओडिशा स्पेसिफिक डिस्कस करतली पांचटा एमसीक्यू मु होमवर्क देतली. आई होप समस्त तो अटेम्प्ट करिथिबे आ जो माने अटेम्प्ट करि नाहंती और जो माने अटेम्प्ट करिसंती तांको पई मु एबे सेगुडा को फर्स्ट डिस्कस करबी देन वी विल टू मूव टू द करंट अफेयर्स पार्ट. बट बिफोर दैट किछि बेसिक इंफॉर्मेशन मु एडी शेयर कर दउची जेमति कि जो माने ओसीएस प्रीलिम्स पई एबे अप्लाई करिथिबे 2024 रो तो सेमानक पई एठी कोर्स रहउची बोथ फॉर जीएस1 एंड जीएस2 प्रोवाइड करा जिवो जो थरे कि सीसैट आउ जीएस1 रो सब जाक सब्जेक्ट इंक्लूड रहउची थ्रू रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स रहउची. प्रीवियस 1 ईयर रो करंट अफेयर्स कवरेज दिया जाउची. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मध्ये डिस्कस होउची एंड प्रीलिम्स रो टेस्ट सीरीज रहउची जोटा कि 24 नंबर रे रहउची 16 टा सेक्शनल रहउची 8 टा फुल लेंथ टेस्ट रहउची. प्रीलिम्स रो टेस्ट डिस्कशन क्लासेस रहउची एंड वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस रो भी ऑप्शन अवेलेबल अछि. तो आपण ए नंबर को जाई के एडमिशन करि परिबे 15% ऑफ रहउची. जहाँ भी क्लास रे डिस्कस करा जिवो तार पीडीएफ टा कमेंट सेक्शन रे लिंक रे प्रोवाइड कर दिया जिवो. ठीक अछि. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. जहाँ भी मु एडी क्वेश्चंस प्रोवाइड करिची सेगुडा मु प्रीवियस क्लास रे होमवर्क देइथिली एंड जहाँ भी क्वेश्चन सेठी अछि प्रीवियस क्लास रे से कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस हेई सारची तो एटा गोटे रिवीजन भलिया भी हेई जिवो. फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि with reference to Kalingan architecture and the Swapneshwar Mahadev temple of Odisha eta current affairs re thila relevant for art and culture. Consider the following statements. First statement kono kahichi the Swapneshwar Mahadev temple is an early example of Kalingan architecture and is believed to have been built during the Sailodbhava dynasty in the 6th century. ठीक अछि. तो एटा दिस इज करेक्ट. जो माने प्रीवियस लेक्चर मोर अटेंड करथिबे तो से माने जानिथिबे कि एटा करेक्ट. स्वप्नेश्वर महादेव टेम्पल टा जोडा रहिला सेडा शैलोद्भव डायनास्टी समय रे 6th सेंचुरी रे कंस्ट्रक्ट हेतिला. तो एटा कलिंगन आर्किटेक्चर रो इजीली गोटे एग्जांपल. तो एटा क्लियरली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट कोन कहिछि कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ द्राविडन स्टाइल स्टेप्ड पिरामिडल टावर्स विमानस विथ एलाबोरेट गोपुरम्स ना. फर्स्ट एबे हमें डिस्कस कले कि एटा होची कलिंगन आर्किटेक्चर और कलिंगन आर्किटेक्चर और द्राविडन आर्किटेक्चर दीटा को डिफरेंट. ठीक अछि. कलिंगन आर्किटेक्चर रे जेमति हमर थाय विमान थाय हेला जागमोहन हेला समटाइम्स नाट्य मंदिर भोग मंडप तो एगुडा द्राविडन स्टाइल एटा आर्किटेक्चर नुह एटा होची कलिंगन स्टाइल आर्किटेक्चर. तो एटा वन ओनली ऑप्शन 1. Question number 2 कोन कहिछि which of the following statements regarding the State Human Rights Commission is correct? First statement the State Human Rights Commission can directly punish individuals. नहीं directly ये punish करि परिबनी to found guilty of human right violations. तो एटा भूल गला. Statement number 2 the State Human Rights Commission is established under the directive principles of state policy. नहीं एटा human rights माने act रे 1993 रे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट रे
एटा ता अंडर एस्टाब्लिश हेतला 1993 रे, नॉट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एटा भी रॉन्ग हेगला. स्टेटमेंट नंबर 3 कोन कहै छै द स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट matters related to human right violations of the state. This is correct. This statement is correct. Generalized अछि आउ previous class रे मु पढ़ाई भी थिली. Fourth option कोन कहै छै the state human right commission functions under the administrative control of supreme court of india. कहै छै कि supreme court of india under रे से काम करै छै नै, एटा wrong अछि. state human right commission एटा गोटे independent body. एटा गोटे independent body. Moving on to question number 3. With reference to Subhadra योजना एबे न्यूज रे रही तो आर अपडेट्स मन रखुथिबे सब बेले कोन ए स्कीम टा माने केते कोन फाइनेंस दिया जाउची केते बेले दिया जाउची कोन एटा बहुत इंपोर्टेंट ए सब छोटो छोटो फैक्ट्स मन रखबे. रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फॉर स्टेटमेंट 1 कोन कहै छी इट प्रोवाइड्स एन इमीडिएट लंप सम एका थरके दे दउचंदी कोन 50,000 टका टू ऑल मैरिड वुमेन एज 18 एंड अबव. दिस इज रॉन्ग. 50,000 एकाथरे दिया जाउनी, एटा 5 वर्ष रे दिया जिवो आ सेटा भी 10,000 रहइबो पर ईयर, जोटा कि पुनी ताकू इंस्टॉलमेंट रे डिवाइड करियो 5,000 6 मंथली बेसिस रे. तो एटा क्लियरली एटा रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर 2, इट ऑफर्स एन एनुअल कैश सपोर्ट ऑफ 10,000. yes, discussed here. To eligible women disbursed in 2 equal parts. yes, of course, installments in each year. ठीक अछि. स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं, एटा तो आंसर तो इडी क्वेश्चन रे ही रहि गला गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे. एटा रॉन्ग हे गला. स्टेटमेंट नंबर 4, द स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू वर्किंग वुमेन इन अर्बन एरियाज. नो, दिस इज रॉन्ग. तो आंसर कोन हबो? ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहै छी? With reference to the new radio outreach initiative in Odisha, current affairs रे अछि एटा. relevant for renewable energy हे गला, environment हे गला, ए सब टॉपिक पई GS3 रो एटा relevant. Claimed to be the first community radio station powered entirely by green energy, जोटा को अछि 100% powered by the green energy or renewable energy. Which one of the following statement is correct? स्टेटमेंट नंबर 1, इट ऑपरेट्स एंटायरली ऑन सोलर पावर. 100% कहू कि ऑपरेट होची सोलर पावर रे, मेकिंग इट ओडिसा फर्स्ट ग्रीन एनर्जी रन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. ट्रू. एटा कते रहउची 90.8 होची तर एफएम इन जगतसिंहपुर ओडिशा. कोड रहउची जगतसिंहपुर रे, जगतसिंहपुर रहउची इन ओडिशा. एटा कोन इज हैज बिकम द स्टेट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दैट रन्स 100% green energy, fully powered by rooftop solar power from transmitters to studio equipment, office system हेला. Second statement कहला it is fully managed and funded by the central government's Ministry of Information and Broadcasting. नहीं नहीं, एटा this is the wrong statement. एटा सेमती किछि तार ऊपर किछि इंफॉर्मेशन नाही कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा एटा फंडेड. सो एटा रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 3 कोन कहै छी इट ब्रॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज एंड रूरल अनाउंसमेंट्स. नाही, एटा भी भूल अछि. ठीक अछि. स्टेशन वाइड रेंज ऑफ ग्रासरूट टॉपिक्स को से कवर करछि, केवल एग्रीकल्चर नो से कल्चर कवर करछि, वुमेन एम्पावरमेंट हे गला, और भी बहुत की चीज, हेल्थ हेला, एजुकेशन हेला से कवर करछि. स्टेटमेंट नंबर 4 कोन कहिला? listeners must own special receivers to tune into the station, not standard FM radios. एडा भी false. ब्रॉडकास्ट होची कोथरे FM 90.8 रे, एतरे से ब्रॉडकास्ट होची एक्सेसिबल वाया ओनली एनी स्टैंडर्ड एफएम रेडियो रे एटा एक्सेसिबल. ठीक अछि, सेमिति ता पई किछि एबे स्पेशल रिसीवर किछि दरकार नै. एटा भी रॉन्ग. तो राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन नंबर 1. Moving on to question number 5. Question number 5, last question of the previous class. Consider the World Police Force and Fire Games. Which one of the following statements is correct? First option,
The WPFG is held every year and is open to all athletes worldwide. नाइ एटा wrong. एटा biennial event. Every year तो एटा no, एटा होची biennial event. माने every 2 years रे एटा होची और participation is restricted to current or retired personnel from the law enforcement हेगला, fire service हेगले, first responders related जे related agencies अछंती, not open to general public. Statement 2, the games are exclusive to active and retired personnel from law enforcement and fire services. Correct? एबे ही discuss कले एटा हमें. Statement number 3, the host city of this game WPFG 2025 was Mumbai, India. नहीं, host city Mumbai नुह. Host city एटा US रे हितला. US रो गोटे city Birmingham रे. ठीक अछि. जोटे अल्बामा US रे एटा host हितला. मुंबई रे हिनतला एटा. एटा भी wrong. The option 4, WPFG includes only track and field events and excludes other sports. ये केवल ट्रैक और फील्ड इवेंट गोटे वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स को से कवर करूची. 60 टा डिसिप्लिन्स रहउची, इंक्लूडिंग स्विमिंग रहिची, टीम स्पोर्ट्स रहउची, टैक्टिकल फायर फाइटिंग चैलेंज रहउची, इवन K9 इवेंट्स रहउची. माने फार बियॉन्ड जस्ट एथलेटिक्स. तो ओनली ट्रैक और फील्ड इवेंट्स ही इंक्लूड रहउनी, आउरी बहुत किछि जिंस इंक्लूड रहउची गेम रे. तो कोटा करेक्ट हबो एडी हमें देखिले. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. आई होप समस्ते आकु अटेम्प्ट करिथिबे आ जो माने अटेम्प्ट करि नांती देन डू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. एबे हमें जिबा करंट अफेयर्स को. फर्स्ट हमें इंडेक्स ता देखिबा करंट अफेयर्स रो. आज कोन कोन रहिची. आज करंट अफेयर्स रे टिके अधिका टॉपिक्स अछि. ठीक अछि, बट आई विल एडवाइस कि आर आपन को पीपीटी टा मिली जिवो. आई मीन सेटा कमेंट सेक्शन रे से लिंक टा मिली जिवो, बट आई वुड एडवाइस टू टेक पॉइंटर्स ड्यूरिंग द क्लास. पॉइंटर्स और शॉर्ट नोट्स. जेमती भी गोटे पेज रे कि गोटे कॉपी रे पॉइंटर्स की शॉर्ट नोट्स नेले सेटा ना लास्ट मोमेंट रिवीजन पई सेटा बहुत हेल्पफुल रहइबो. ठीक अछि. तो मुइठी बे जहा जहा कहिबी तो डू ट्राई टू टेक शॉर्ट नोट्स. आज टिके करंट अफेयर्स अधिका अछि. GS1 रे हेरिटेज लवर्स एक्सप्लोर ग्रामेश्वर महादेव श्राइन रसगोला दिवस ऊपर करंट अफेयर्स अछि. इकतन ओटीवी ग्रुप रो गोटे इनिशिएटिव टू रिवाइव ओडिसा रो जो इकत हेरिटेज रहिला ता ऊपर गोटे अछि. आषाढ़ी फेस्टिवल ऊपर अछि. GS2 ओडिशा बेंगल फेल्ड टू एक्ट अगेंस्ट NRI कोटा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऊपर करंट अफेयर्स. 4 डे AI वर्कशॉप लॉन्च हेची ओडिशा रो पब्लिक सर्विसेज को बूस्ट करिवा पई. दारिंगबाड़ी रे एग्री वुमेन पावर को एटा एम्पावर करा जाउची. मिशन शक्ति पुशेस फॉर वैल्यू एडिशन. जो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन, टर्मरिक और कॉफी कल्टीवेशन रे वैल्यू एडिशन पुश करा जाउची. Odisha Information Commission hosts law interns for RTI training. Odisha reintroduces pass fail, again se pass fail system reintroduce hechi 5th and 8th रे. Odisha State Law Commission holds its first meeting. GS3 रे आजी सबुठारु अधिका करंट अफेयर्स रहिची. फर्स्ट, NATGRID urges state to use database to curb crime. 10 लाख ग्रीन 10 लाख ग्रीन लाइवलीहुड बाय 2036 सीएम कहचंदी. एटा एप्लीकेबल हे जो बाय 2036. देन गवर्नमेंट लॉन्चेस रूफटॉप गार्डनिंग कैंपेन. वैनिशिंग लैंड केंद्रापड़ा जो कोस्टल इरोजन चलची ता ऊपर करंट अफेयर्स अछि. नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क रे गौर रो गोटे नुआ काफ रो बर्थ हेची ता ऊपर करंट अफेयर्स अछि. अ ट्री फॉर मदर कैंपेन जोटा BMC लॉन्च करिची ताकू हमें पढ़िबा. ओडिशा टू होस्ट माइनिंग एक्सपो इन 2026 रो ओडिशा माइनिंग एक्सपो को होस्ट करिबो ता ऊपर इंफॉर्मेशन अछि. ओडिशा रो डेमोग्राफिक शिफ्ट ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देखिबा. इको वॉक मिनी फॉरेस्ट इनिशिएटिव एटा की कोठी हेची बालेश्वर ओडिशा रे एटा गोटे नुआ इनिशिएटिव हेची. तालचेर राउरकेला 10 टा जो इंडिया रो सिटीज अछंदी मोस्ट पॉल्यूटेड रे तालचेर और राउरकेला भी आसीची. तो आ ऊपर करंट अफेयर्स भी अच्छी. पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट लॉन्च्ड इन ओडिशा आ ऊपर करंट अफेयर्स अच्छी. स्टेट सेट टू लीड इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन. लास्ट करंट अफेयर्स.
फर्स्ट करंट अफेयर्स आमे देखिबा NATGRID urges states to use database to curb crime. तो एठी से कौन कहला द NATGRID नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जोटा कहउचंदी सी स्टेट गवर्नमेंट मानु को कहिची एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कहिची कि टू यूटिलाइज द जो सेंट्रलाइज जो डाटाबेस रहिला क्राइम्स को नेकी क्रिमिनल्स को नेकी टू इंप्रूव क्राइम डिटेक्शन द सेंट्रलाइज डाटाबेस को यूटिलाइज बेटर कले कोन हो क्राइम डिटेक्शन बेटर हो इन्वेस्टिगेशन बेटर हो तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर एनफोर्स हे परिबो सोसाइटी रे तो ए जो मूव टा एम कोन करचे रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर बेटर इंटर एजेंसी जहाँ भी पुलिस रहिले कि इंटेलिजेंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जहाँ भी सब रहिले तांको भितर गोटे कोऑर्डिनेशन सिनर्जी क्रिएट हे परिबो ताकि बेटर क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन रे सेटा हेल्प करिवो आ प्रिवेंटिव पुलिसिंग एटा रे भी हेल्प करिवो नाउ NATGRID टा इंपोर्टेंट कोन पई पर्पस कोन NATGRID रो NATGRID जोटा कहउछन नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड होची गोटे सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म गोटे सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म जोटा कि एडा कहा अंतर्गत आसुची मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर रे सेडा आसुची जोटा कि केबे डिजाइन हितला केबे एस्टैब्लिश हितला 26/11 जो मुंबई अटैक्स हैला सेते बळे जो इंटेलिजेंस इंडिया रे इंटेलिजेंस रो जतबळे फेलियर हैला सेते बळे गोटे लैकुना जतबळे क्रिएट हैला आ नीड सेटा नीड हैला तो सेते बळे NATGRID को फॉर्म करा जाइतिला गोटे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एटा नुहे ठीक अछि एटा गोटे डाटा फ्यूजन सेंटर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नुहे एटा गोटे इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म डाटा सेंटर डाटा फ्यूजन सेंटर हिसाब रे गोटे काम करे माने डिफरेंट सोर्स रो डाटा कलेक्ट करके कंबाइन करके एनालिसिस करी से ऑथराइज्ड माने करे लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज को ठीक अछि डाटा फ्यूजन सेंटर तो एबेर रेलेवेंस कोन ओडिसा पाई रेलेवेंस फॉर ओडिसा होची फर्स्ट थिंग बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी ओडिसा रो तो देखु दियो गोटे तार कोस्ट होची 480 किलोमीटर नियरली 480 किलोमीटर रो कोस्ट लाइन रोची जोटा कि वल्नरेबल होची इलीगल ट्रैफिकिंग हैला इलीगल ट्रैफिकिंग स्मगलिंग इनफिल्ट्रेशन तो कोस्ट लाइन इज जनरली वल्नरेबल टू दीज थिंग्स तो NATGRID थ्रू रो कोन होची लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन होची तो सेतरे बॉर्डर आ कोस्टल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होची सेकंड स्टेटमेंट कहला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो सदर्न ओडिसा रही गला वेस्टर्न ओडिसा रही गला से डिस्ट्रिक्ट माने कोन करछन सेति सदर्न ओडिसा वेस्टर्न ओडिसा माओइस्ट एक्टिविटी सेठी प्रिवेलेंट रहउची तो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो NATGRID थ्रू रो हबो तो से कोन करबो माओइस्ट एक्टिविटी को ट्रैक करबो अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड it will strengthen the law enforcement in those areas. Third, cyber and organized crime. Increasing cases of online fraud, narcotics and trafficking highlight the need for inter-agency and interstate cooperation. Online रे जते भी सब fraud होची, narcotics, trafficking, smuggling, infiltration, जते भी जहाँ सब होची cyber की organized crime under रे तो जते बड़े inter-agency cooperation थिबो, रियल टाइम डाटा शेयर हे पारुथिबो तो सेते बेले कोन हो इंटरस्टेट कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हबा और इंटरस्टेट कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हेले तो पूरा कंट्री रे बा पूरा स्टेट रे भी लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन हबो तार बेनिफिट कोन मिलिबो ऑब्वियसली फर्स्ट बेनिफिट मिलिबो सर्वेलेंस तो इंप्रूव होउची ही काइना रियल टाइम रे जते बेले डाटा शेयरिंग होउची लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भितरे तो सर्वेलेंस तांकर इंप्रूव हबो बेटर ट्रैकिंग हबो बेटर लॉ एनफोर्समेंट हबो तो एटा ओडिसा रो पुलिस helps Odisha police track interstate criminals maoist movement track करिबारे कि financial fraud एटा track करिबारे helpful हबो secondly data driven policing डाटा शेयर होची लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जते भी सेंटर रहिला जो डाटा फ्यूजन सेंटर कहउछन NATGRID को तो ये टेलीकॉम बैंकिंग ट्रैवल डाटा ए सब को सिनर्जिस्टिकली कंबाइन करिकि एटा रियल टाइम रे शेयर होची तो रियल टाइम रे शेयर हेले कोन हबो
पैटर्न ट्रेस हम, पैटर्न ट्रेस हम, तो डाटा ड्रिवन पोलिसिंग एटा को कहउछंती। थर्ड, सपोर्ट्स क्राइम मैपिंग, यूजफुल फॉर हाई सेंसिटिविटी जोन्स लाइक मालकानगिरी, कोरापुट, गंजाम, आउ जो माओइस्ट एक्टिविटीज जोटी रहिला, माओइस्ट एक्टिविटीज जमती कि सदर्न आउ वेस्टर्न ओडिसा रे रहिला, तो सेठी कोन हबो, सेठी क्राइम बेटर क्राइम मैपिंग हे परिबो कि एई जगह होचंती माने एठी बेसी क्राइम होची आ एई क्राइम होची, तो बेटर क्राइम मैपिंग हेले हाई सेंसिटिविटी जोन्स रे, तो सेठी बेटर लॉ एनफोर्समेंट हबो, बेटर law enforcement which will lead to peace and better security. जे कौन से जिनस समस्त जदि प्रोज रही कॉन्स भी रही, चैलेंजेस ऑब्वियसली NATGRID रे भी चैलेंजेस रोची। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी बिल्डिंग, जेते स्टेट लेवल ऑफिशियल्स रहिले कि जेते लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स रहिले, जे कोनसी तो तांकर जेते बळे माने एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी, NATGRID रो कोन गोटे डाटा सेट रहउची, तो से माने जानि पार नांती ताको एक्सेस केमिति करिवे, बेटर ताको ऑपरेट और इंटरप्रेट केमिति करिवे। जेते बळे ताकर ट्रेनिंग हे जिवो, तो से माने एटा को बेटर अंडरस्टैंड करि परिवे कि जो NATGRID रो डाटा सेट रहउची ताको केमिति ठीक से ऑपरेट और इंटरप्रेट करिवार अछि। सेकंड, प्राइवेसी कंसर्न्स नीड टू एंश्योर दैट डाटा इज एक्सेस्ड विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदिन द लीगल लिमिट्स। प्राइवेसी कंसर्न्स रोची, डाटा जो स्टोर हेकी रहिला, तो सेतिर ऑब्वियसली लोक मानकर प्राइवेसी कंसर्न्स आसुची, तो एटा एंश्योर करिबा बहुत इंपोर्टेंट कि जो डाटाटा स्टोर होची सेटा प्रॉपर ऑथराइजेशन, गोटे अथॉरिटी रो प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन रे आउ लीगल लिमिट्स रे से जिनसटा स्टोर होची आउ रियल टाइम रे शेयर होची। फेडरल ट्रस्ट डेफिसिट, some states are cautious about central surveillance tools, तो NATGRID टा कोन, NATGRID एटा गोटे सेंट्रल डाटा फ्यूजन सेंटर भली, तो सबु बहुत फेडरल प्रॉब्लम्स रहउची, स्टेट मध्य रे भी रहउची, सेंटर और स्टेट मध्य रे भी फेडरल प्रॉब्लम्स रहउची, तो बहुत स्टेट NATGRID ऊपर इजीली से माने ट्रस्ट करि पार नांदी, से माने दे आर कॉशियस, दे आर कॉन्शियस अबाउट NATGRID। तो एटा भी NATGRID रो परफॉर्मेंस को फर्दर, तार पर्पस को फर्दर हैम्पर करूचे। तो एटा केमिति को भली भाबरे भलो से इंप्लीमेंट करा जाई परिबो, ए जो स्टेपटा निया जाई छि NATGRID, तो आकु भलो से इंप्लीमेंट केमिति करा जाई परिबो। फर्स्ट रही छि इंटीग्रेशन विथ SCRB, इंटीग्रेशन विथ द स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एंड CCTNS ओडिशा, तो एथरे के फेडरल इश्यू भी सॉल्व होची विथ द प्रॉपर इंटीग्रेशन। ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स, बेटर जेते बळे ऑफिसर्स मानकर, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मानकर ट्रेनिंग हे जिवो, तांकर कैपेसिटी बिल्डिंग हे जिवो, तो से माने बेटर जानि परिबे कि NATGRID टाकू केमिति इंटरप्रेट करा जाउची, केमिति यूज करा जाउची फॉर फर्दर लॉ एनफोर्समेंट। देन लीगल सेफगार्ड्स, जो प्राइवेसी कंसर्न्स रोची ता पई लीगल सेफगार्ड्स दबा लोगों को बहुत इंपोर्टेंट, लीगल सेफगार्ड्स एंड स्टेट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स टू अवॉइड द मिसयूज। क्वेश्चन नंबर 1, एटी NATGRID ऊपर क्वेश्चन अछि, समस्ते ए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिवे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन एटी कोन कहछि, विथ रेफरेंस टू NATGRID ऊपर क्वेश्चन अछि, एबे मु पढैली, एबे चारटा जाक ऑप्शन को भल से पढिबे, आ एठी देछि गोटे जिंस मने रखबे, एटी करेक्ट देछि, मु एटी इनकरेक्ट लेखिनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, एटी मु इनकरेक्ट लेखिनी, एटी करेक्ट लेखा आइछि, तो जेतेबेले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूथिबे तो एटी सब बेले एटा नजर रखुथिबे कि करेक्ट देछि कि इनकरेक्ट देछि, ठीक अछि, नले आपण इनकरेक्ट भाबी कि करेक्ट टिक करथिबे और करेक्ट भाबी कि इनकरेक्ट टिक करथिबे, आको कमेंट्स रे आंसर देबे ए क्वेश्चन रो। Moving on to next current affairs, Odisha Bengal failed to act against illegal NRI quota, कौन कहिजे? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एटा GS2 सोशल जस्टिस पाई इंपोर्टेंट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट
has accused authorities in Odisha West Bengal भी अछि but primarily हम एटी ओडिशा पे देखिबा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोन करछि accuse करछि ओडिशा को कोथ पे कि failing to act against the illegal admission होछि को मानकर under NRI कोटा को illegally misuse करिकरी certain private medical colleges रे illegal admissions चलछि तो एठी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कंडेम करिछि ओडिशा को and West Bengal also. This follows clear and categorical information from the Ministry of External Affairs pointing to forced documents use करके under NRI quota और ineligible candidate माने कौन करछन्ती ना medical private medical college रे admission नहीं होउछन्ती तो एठी important हे जाउची गोटे जिंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विषय जानिबाटा व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तार गोटे ओवरव्यू से करे कोन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होची गोटे फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गोटे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एटा मने रखुथिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट कि जदी किछ गोटे बॉडी आपण पढुचंदी से को डिपार्टमेंट अंडर रे फॉल करछि को मिनिस्ट्री अंडर रे फॉल करछि काना एग्जाम रे से क्वेश्चन एमिति से फ्रेम कर दबो बॉडी दे देथिबो आ ऑप्शन रे से भूल डिपार्टमेंट की भूल मिनिस्ट्री से मेंशन कर दबो एंड जदी आपण को आईडिया नथिबो देन वी विल टेक द रॉन्ग आंसर एंड यू विल एंड अप in negative marking ED केबे एस्टैब्लिश हेतला 1956 रे एटा भी मने रखियो गोटे फैक्ट ओरिजिनली टू एनफोर्स द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा एक्ट जो रहितला फर्स्ट प्राइमरीली से आको एनफोर्स करबा को एस्टैब्लिश हेतला देन एटा एबे गोटे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैंडेट आउ तार फंक्शन कोन रहउची एनफोर्समेंट ऑफ टू मेजर लॉज दीटा मेजर लॉ को से तार एनफोर्स करबा तार प्राइमरी फंक्शन गोटे होची पीएमएलए Prevention of Money Laundering Act 2002 investigate and prosecutes जते मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस रहला ताको इन्वेस्टिगेट करबो प्रोसिक्यूट करबो क्रिमिनल्स मानको आ गोटे तो फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जोटा कि फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस रहउची सिविल नेचर रो 1999 रे एटा ए एक्ट आसितला ताको मध्ये एनफोर्स करबा ईडी रो काम सेकंड अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स जहाँ भी इलीगली जो माने एक्वायर करचंदी प्रॉपर्टी गोटे ऑर्गेनाइजेशन हो कि गोटे इंडिविजुअल हो से कौन करिवो से प्रोविजनली कैन प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टीज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइम्स हवाला ट्रांजैक्शन एगला करप्शन बैंक फ्रॉड बेनामी प्रॉपर्टीज टेरर फंडिंग स्मगलिंग ब्लैक मनी everything it can investigate financial crimes fourth international cooperation coordinate with the Interpol जो international crime investigating agencies रहिले Interpol रहिला Interpol रो समस्त मध्ये एबे कमेंट सेक्शन रे कहबे Interpol रो हेडक्वार्टर कोठी where is the headquarter of Interpol FATF रहिला foreign agencies रहिला on cross border money laundering आउ एटा मैटर कोन पई करूची ओडिसा पई की व्हाई दिस थिंग मैटर्स फॉर ओडिसा वायलेशन ऑफ द मेरिट बेस्ड एडमिशन जो माने कि फॉल्टी एनआरआई कोटा अंडर रे से माने तार एडमिशन नै गले तो सेतरे कोन हला जो डिजर्विंग कैंडिडेट रोची तार सीट को से माने नै गले ठीक अछि तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट रोची ताको सीट मिलिलानी देन सो इट विल वायलेट द मेरिट बेस्ड एडमिशन जाको मेरिट बेसिस रे मिली आरथिला तो ताको सीट मिललानी तो इनएलिजिबल कैंडिडेट कोन गले मैनिपुलेटिव एनआरआई कोटास अंडर रे सेमाने सीट नहीं गले सेकंड रेगुलेटरी लैप्सेस इन ओडिशा डिस्पाइट अलर्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रो माने मल्टीपल अलर्ट आउ कंडेम करा जिवा पर भी सेमति किछि स्पेसिफिक स्टेप निया जायनी ओडिशा रे स्टेट अथॉरिटीज को द्वारा जोटा कि गोटे पॉसिबल फेलियर होची रेगुलेटरी एनफोर्समेंट रो से माने केमिति लॉ एनफोर्समेंट को एनफोर्स करूचंदी स्टेटमेंट नंबर 3 प्राइवेट कॉलेज ओवरसाइट एनआरआई कोटा अंडर से माने एडमिशन तो नहीं गले बट प्राइवेट कॉलेजेस एटा अलाउ केमती कर देले तो प्राइवेट कॉलेजेस मानकर ओवरसाइट एटी तो क्वेश्चन करा जाउची there is a serious question about the functioning and the accountability of the private medical institutions in the state तो से माने को हिसाब रे एडमिनिस्टर करूचंती तांको एडमिनिस्ट्रेशन तांको मैनेजमेंट केमिति कि माने ए टाइप रो फ्रॉड सेटी पॉसिबल हे परची तर यार गोटे वे फॉरवर्ड कोन आर सॉल्यूशन कोन कंक्लूजन कोन हबा दरकार फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखबे कि सिक्योरिंग फेयर एनआरआई कोटा एडमिशन एटा केमिति पॉसिबल फर्स्ट अनवेरिफाइड
admissions vulnerable to manipulators and errors, जोटा कि unverified admissions रहिला ताकू केमिति फर्दर वेरीफाई करा जिवो, वेरिफिकेशन स्टेप्स कोन कोन सब निया जिवो, सो दैट माने सेटा माने मैनिपुलेशन गोटे करबनी सिस्टम रे, एरर क्रिएट करबनी सिस्टम रे, आ मेरिट बेस्ड एडमिशन पॉसिबल हे परिबो। स्टेट लेवल ऑडिट, स्टेट लेवल रे भी ऑडिट हवा दरकार, सेंटर बहुत थर कंडेम करि सारलानी, तो स्टेट लेवल रे जदी एनआरआई कोटा को नेकी स्क्रूटिनाइजेशन हबो, ऑडिट हबो, इट विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। थर्ड, टास्क फोर्स सेटअप, आ ए सब जिंस को करिवा पाई की गोटे स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स एस्टैब्लिश हवा दरकार फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन और फॉर ओवरसाइट। वेरिफिकेशन को स्ट्रेंथन आउ एनहांस करबा इंपोर्टेंट एठी। स्ट्रेंथन्स तो एटा जेतबे वेरिफिकेशन स्ट्रांग हे जिवो सेतबे डिजिटल सिस्टम जो रहिला एडमिशन रो सेटा एक्यूरेट हे जिवो आउ स्ट्रेंथन हे जिवो। वेरीफाइड एडमिशंस ट्रांसपेरेंट, कॉम्प्लायंट एंड मेरिट बेस्ड, तो ए सब जिंस जेतबे वेरीफाई हवा एडमिशन, स्टेट लेवल ऑडिट, टास्क फोर्स सेटअप हे गला, एनहांस हे गला, वेरिफिकेशन सॉरी जीवो, तो सेतबे रिजल्ट कोन हबो, वेरीफाई एडमिशंस टू डिजर्विंग candidates in a transparent, compliant and merit based manner. Then next current affairs रे हमरो कोन इंक्लूड अछि, हेरिटेज लवर्स एक्सप्लोर ग्रामेश्वर महादेव, एटी मंदिर आसी गला, टेंपल, द आर्ट एंड कल्चर, एंड एटा ए करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पई बहुत इंपोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन फैक्ट्स रोची, इंफॉर्मेशन रोची, टेंपल ऊपर अछि, आर्ट एंड कल्चर, किंतु आको मेंस रे भी यूज करि परिबे as example। न्यूज रे कोन अछि, on July 7th the 6th edition of Jagatsinghpur Heritage Walk, 7 जुलाई रे 6th edition जगतसिंहपुर हेरिटेज वॉक्स रो से माने कोन कले एक्सप्लोर कले हिस्टोरिक ग्रामेश्वर महादेव टेंपल, जोटा कि पंचपल्ली विलेज रे अछि जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे, से माने को एक्सप्लोर करथिले। आ ए इवेंट टा माने एटा 40 जण हेरिटेज एंथुसियास्ट, ए जगतसिंहपुर हेरिटेज वॉक रे 40 हेरिटेज एंथुसियास्ट पार्टिसिपेट करथली फ्रॉम अक्रॉस ओडिशा, organized to highlight the region's cultural, religious and historical significance। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रोजी गोटे माइथोलॉजिकल स्टोरी एठी रोजी, जोटा कहउछनी काउ हर्डर स्टोरी, ए टेंपल पछरे गोटे माइथोलॉजिकल स्टोरी भी रोजी। तो से स्टोरी हिसाब रे कोन कि गोटे काउ हर्ड सी कोन थरे ऑब्जर्व कला, ऑब्जर्व अ काउ रेगुलरली रिलीजिंग मिल्क एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, गोटे स्पेसिफिक स्पॉट रे गोटे गाईटे रेगुलरली से मिल्क रिलीज करूची। जेतेबेले से स्पेसिफिक स्पॉट को एक्सकावेट करागला तो सेथिरे शिवलिंग डिस्कवर करागला। सेतेबेले थिले द किंग ऑफ विष्णुपुर नेम्ड इट ग्रामेश्वर, लॉर्ड ऑफ द विलेज। सो जो जगह सेटा एक्सकावेट करागला, खोली की बाहर करागला, तो सेटा को सेई जगार ना रे ग्रामेश्वर रखि दिया गला, और लॉर्ड ऑफ द विलेज, ग्रामेश्वर माने लॉर्ड ऑफ द विलेज किए रखिले, किंग ऑफ विष्णुपुर। A thatched temple was first गोटे एमती गोटे नॉर्मली गोटे टेंपल एमती गोटे thatched टेंपल बिल्ड करा जाइतला। देन कन्याकुब्ज रु से जो ब्राह्मण माने सेठी की इनवाइट होउतले, कोथि पई की रिचुअल्स पूजा पाठ करिया पई से माने इनवाइट होउतले। पुराणिक रेफरेंस जोटे गर्ग पीठ कहउचंती, as per another legend sage गोटे ऋषि थिले गर्ग करिकरी, son of lord ब्रह्मा had originally installed the शिवलिंगम। तो एटा गोटे पुराण रेफरेंस कहउची, सेटा तो काउ हर्ड गोटे माइथोलॉजिकल रेफरेंस गला, एटा पुराण रेफरेंस हिसाब रे गर्ग जो ऋषि मुनि थिले, से लॉर्ड ब्रह्मांकर सन, सीए ए शिवलिंग को इंस्टॉल करिथिले, सेठी स्थापना करिथिले। आफ्टर सेज गर्गस डिमाइज द लिंगम वाज बरीड एंड रीडिस्कवर्ड। गर्गंकर डिमाइज परे, तांकर मृत्यु परे लिंगटा देन माने बरी हे जाइतला, तापरे पुणी रीडिस्कवर हैला। तो से साइट टाकू गर्ग पीठ बोली कहउचंदी, सेति पई से साइट टाकू गर्ग पीठ बोली कहउचंदी। आ गोटे सेठी गोटे छोट आ गोटे मूर्ति भी अछि, सेज गर्गंकर गोटे मूर्ति भी अछि सेई
पीठ भितर मंदिर भितर ग्रामेश्वर मंदिर भितर आर्कियोलॉजिकल आउ रिलीजियस फीचर्स कौन रहा मंदिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ 71 फुट हाई टेम्पल ओरिजिनली जो टेम्पल टा गोटे थास्ट टेम्पल बिल्ड हेतला तापर गोटे 71 फुट रो गोटे टेम्पल बिल्ड हैला लोकल्स आउ टेम्पल ट्रस्ट द्वारा एटा पॉसिबल हे परला देन मैनेज्ड एबे ताको मैनेज किए करूची एंडाउमेंट कमिशन गोटे रजिस्टर्ड ट्रस्ट एटा गोटे एंडाउमेंट कमिशन थ्रू अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट से ताको मैनेज करूची टेम्पल टाको लॉर्ड शिव को छड़ा सेठी आ कोन कोन सब को ठाकुरंकर मूर्ति रहिची लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा in the Nrsimhanath shrine on the premises Nrsimhanath shrine से premises पाखरे अछि तो सेठी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर आइडल्स मध्ये पूजा पाउची लास्ट नोन फॉर इट्स कार्व्ड स्टोन वर्क रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस एंड ईयर राउंड फेस्टिवल्स एगुडा होची एटा होची तार आर्टिस्टिक फीचर तार रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस रहिची आ वर्ष सारा किछ ना किछ फेस्टिवल्स सेठी लागि रही थाए ग्रामेश्वर महादेव टेम्पल ऊपर एटी क्वेश्चन मु प्रोवाइड करछि समस्त चारटा स्टेटमेंट को ठीक भाबरे पढिबे करेक्ट आंसर एटी मु चूज करिया को देछि फोर चारटा ऑप्शन देछि आ विद्रु करेक्ट आंसर चूज करिवे कमेंट सेक्शन रे कहबे एंड नेक्स्ट क्लास रे मु आको डिस्कस करिवे नेक्स्ट 10 लाख ग्रीन लाइवलीहुड्स बाय 2036 told by chief minister of Odisha who is मोहन चरण माझी आउ एटा अनाउंस के बेहला एटा अनाउंस हला 76th वन महोत्सव सेलिब्रेशन 2025 जोटा कि भुवनेश्वर रे हेइथिला तो सेठी चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी कोन करथले कोन अनाउंस करथिले कि 10 लाख ग्रीन लाइवलीहुड क्रिएट करा जियो बाय 2036 भितरे एज पार्ट ऑफ विजन ओडिशा अंडर रे 10 लाख ग्रीन लाइवलीहुड क्रिएट करा जियो बाय 2036 आउ एटा कोथि में क्रिएट करा जियो as a model in ecotourism and sustainable forest based economy होजी हो तारो प्राइमरी एम की अनाउंसमेंट्स टारगेट्स कोन रहिची ए अनाउंसमेंट अंडर रे ग्रीन लाइवलीहुड क्रिएशन ऑब्वियसली 10 लाख ग्रीन जॉब्स क्रिएट करा जिवो वाया कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स जो रहिला देन फोकस ऑन द ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट इको टूरिज्म माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जेमति फॉर एग्जांपल कोन हैला केंदू लीव्स टैमराइंड आंकर वैल्यू चेन इंप्रूव करिया पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी ए ग्रीन लाइवलीहुड क्रिएशन टाको करा जाउची एटा भी इंक्लूड अछि सेकंड 100 फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहिला एमएफपी जो रहिला जेमि साल लीव्स एगला टैमराइंड एगला बैम्बू मेडिसिनल प्लांट्स रहिला ताको पे प्रोसेसिंग यूनिट्स जेमि प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोसेस हला परे सेवन कोन करा जियो मार्केट को छडा जियो मार्केट रो छडला परे एटा एम्पावर करिवो को मन को ट्राइबल पीपल आंकर एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट हबो एक्सपेक्टेड टू जनरेट 5000 crore रेवेन्यू massive afforestation drive एटा last year 6.69 crore saplings planted under एक पेड़ मां के नाम ओडिशा रैंक 4th in India एटा इंडिया रो गोटे इनिशिएटिव जो जहां अंडर रे ओडिशा रैंक 4 गछ लगेइबारे एटा गोटे मैसिव afforestation drive दिस ईयर टारगेट होची 7.5 crore रो चारा लगेइबे देन palm tree plantation for lightning mitigation 19 lakh palm trees planted last year 19 लाख लास्ट ईयर प्लांट हेतला आ 18 लाख ए ईयर प्लांट हमारा टारगेट रही छे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन्वेस्टमेंट्स 50 crore फॉर सिमलीपाल नेशनल पार्क कंजर्वेशन आकर कंजर्वेशन पई एटा अलॉट हबो एआई बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम टू बी डिप्लॉयड एआई बेस्ड फॉरेस्ट फायर गोटे न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी जेते बळे फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन रे सेटा को काम रे लगेबे बा डिप्लॉय करिवे सेतरे कोन हो बेटर फायर डिटेक्शन आउ फर्दर एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट फायर ताकू रोका जाई परिबो
देन रिवाइज्ड कंपेंसेशन फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत थोड़ा न्यूज रे देखुथिबे कि हाथी कि बाघ एमाने सब पळै आछचंदी अर्बन एरिया को कि रूरल एरिया को तांको हैबिटेट रो बाहर कि से माने पळै आछचंदी तो एटा गोटे कोन क्रिएट करछि गोटे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करछि तो एठी कंपेंसेशन दबा कथा माने चला हेछि जो कंपेंसेशन टा 6 लाख दिया जाउतला एबे 10 लाख दिया जिवो जहां भी क्षय क्षति होउची फॉर लॉस ऑफ लाइफ 10 लाख कंपेंसेशन दिया जिवो एनहांस्ड कंपेंसेशन इन अदर कॉन्फ्लिक्ट कैटेगरीज एज वेल बाकी कैटेगरी रे भी कंपेंसेशन को बढ़ाई दिया जाय छै रिकॉग्निशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट स्टेट लेवल अवार्ड फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटीज कलाहांडी तुलंगपदर एफपीसी कलाहांडी रिस्टोर्ड 50 हेक्टर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एटी किस्टा एग्जांपल रही जहां को आपण कोट करि परिबे मेंस आंसर रे पहाड़पुर एफपीसी करंजिया पेट्रोल 159 हेक्टर प्रिवेंटेड फॉरेस्ट फायर 5 वर्ष धरि कि से माने फॉरेस्ट फायर को सेठी प्रिवेंट करि चलछथि एगुडा बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल हिसाब रे कोट करि परिबे व्हाइल राइटिंग आंसर्स ऑन community involvement or people involvement in conservation of environment or forests एबे एटा मैटर कोन पई करू छे ए जो 10 लाख ग्रीन लाइवलीहुड जो दिया जब 2036 एथरे हबो कोना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रहला स्पेसिफिकली तार जो गोल नंबर 13 रहउची क्लाइमेट एक्शन एटी कोन मेंशन अछि ग्रीन तो ऑब्वियसली एटा क्लाइमेट एक्शन जो फर्दर क्लाइमेट चेंज होची ताको मिटिगेट करिवो अडैप्टेशन एनफोर्स करिवो आ 15th नंबर एसडीजी रहला लाइफ ऑन लैंड एंड एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट आउ ताकर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स क्रिएट होची फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमें देखिले तो एटा इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट करूची अमंग स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटी ग्रीन जॉब्स ग्रीन लाइवलीहुड सेठी दिया जाउ ग्रीन जॉब्स जेतोले जॉब दिया जिवो एटा कोन एड्रेस करिवो अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस करिवो आ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज करिवो पोजीशंस ओडिशा एज अ लीडर इन इको टूरिज्म एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स इन ईस्टर्न इंडिया नेक्स्ट करंट अफेयर्स अछि 4-day AI वर्कशॉप लॉन्च टू बूस्ट ओडिशास पब्लिक सर्विसेज जीएस पेपर 2 ई गवर्नेंस रो एटा पार्ट ओडिशा पब्लिक सर्विसेज रे एआई इंटीग्रेट केमिति एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करा जिवो फॉर गवर्नेंस पर्पसेस तो सेति पे 4 days एआई वर्कशॉप लॉन्च हेछि टू स्ट्रेंथन ओडिशास पब्लिक सर्विसेज न्यूज टा कोन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट पार्टनरशिप विथ वधवानी फाउंडेशन ए दी जण इन अ पार्टनरशिप इनागुरेट करचंदी एआई चैंपियंस वर्कशॉप गोटे 4 दिनिया एआई चैंपियंस वर्कशॉप at the Odisha State Convention Center Bhubaneswar रे the initiative is a part of the larger Odisha AI mission रो ए इनिशिएटिव टा गोटे पार्ट तार एम कोन ए इनिशिएटिव रो गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी रे केमिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडिक्वेटली एटा को इंटीग्रेट करा जाई परिबो सो दैट ई गवर्नेंस विल बी स्ट्रेंथेन्ड आउ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टा efficient for efficient public service delivery फर्स्ट हमें जानिबा एटा जहा अंडर रे जाउची जोटा कि रहिला ओडिशा एआई मिशन तो ओडिशा एआई मिशन कोन ओडिशा एआई मिशन एटा गोटे फ्लैगशिप इनिशिएटिव माने ए इनिशिएटिव अंडर रे आहुरी बहुत गुडे छोट छोट इनिशिएटिव्स कैरी होउची तो जो मदर इनिशिएटिव जोटा जो इनिशिएटिव टा रहबो ताको फ्लैगशिप इनिशिएटिव कहंती आ एटा को डिपार्टमेंट अंडर रे जाउची इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट अगेन आई एम सेइंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज इंपोर्टेंट आपको मने रखिबे नोट डाउन करूथिबे फॉर लास्ट मिनिट रिवीजन एम होची फॉर प्रमोटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गवर्नेंस पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केमिति इंटीग्रेट करी ई गवर्नेंस को प्रमोट करा जिवो तो सेथिरे एफिशिएंट पब्लिक डिलीवरी केमिति पॉसिबल हबो आउ जो स्टेक होल्डर्स रहिले जो कर्मचारी माने रहिले ऑफिशियल्स रहिले डिपार्टमेंट करे तांकर केमिति ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को फर्दर प्रमोट करा जिवो तो सेटा ओडिशा एआई मिशन रो गोटे एम इट सीक्स टू मेक ओडिशा पायोनियर एमंग इंडियन स्टेट्स इन एआई ड्रिवन गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन एआई ड्रिवन गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन रे ओडिशा को गोटे लीडर एज अ पायोनियर स्टेट among all the Indian state एटा भी देखेबा आर गोटे मिशन ऑब्जेक्टिव कोन रोजे ओडिशा एआई मिशन रे बिल्ड एआई कॉम्पिटेंसी विद इन द गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट आउ ऑफिशियल मानकर जो स्किल रहिला स्किल अछि से मानक पाके ताको अपस्किल करेबा विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग ऑन कहा ऊपर है वो एआई टूल्स मशीन लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग क्रिएट अ pool of AI champions within department to lead innovation आ जो माने ए सबु ट्रेनिंग ए सबु टूल्स ऊपर से माने एक्सेल करिवे से मान को कुआ जेबो एआई चैंपियंस तो सेमिति बहुत गुडे एआई चैंपियंस को विदिन डिपार्टमेंट्स को निया जाय कि तो से माने गोटे गोटे प्रोजेक्ट लीड करिवे ऑन इनोवेशन ऑन फर्दर इनोवेशन सेकंड पायलट एंड स्केल एआई यूज केसेस First, launch AI-based pilot projects in sectors like health, agriculture, education, and pilot basis रे first एटा launch हबा AI-based project जेमति कि health sector रे हेगला, agriculture sector रे हेगला, education sector रे हेगला, infrastructure sector रे हेगला. Then scale successful models across the state. और जहाँ भी successful रहइबो ताको state across the state ताको further spread करा जिवो. Third, improve public service delivery. Use AI for predictive governance, targeted welfare, and efficient monitoring. ये सब रे भी use of artificial intelligence. Objective of the workshop जो 4 days रो workshop रहउची कहा अंडर जोटा ओडिशा एआई मिशन अंडर जोटा 4 days रो workshop रहउची तार की ऑब्जेक्टिव रो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होची कैपेसिटी बिल्डिंग जो डिपार्टमेंट माना करे जो ऑफिशियल्स रहिले बा सिविल सर्वेंट्स रहिले ताकर कोन हबो अपस्किलिंग बा कैपेसिटी बिल्डिंग हबो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल मानकर अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स फोकस्ड ऑन एआई लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंप्लीमेंटेशन सेकंड की ऑब्जेक्टिव कोन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रेनिंग सेशंस ऑन एआई सेशंस ऑन जेतबे ट्रेनिंग पीरियड रे कोन हबो एआई ऊपर सेशन निया जिवो मशीन लर्निंग ऊपर तांकर सेशन निया जिवो जेनरेटिव एआई टूल्स जत्ते सब रहला तांको ऊपर ट्रेनिंग आउ सेशंस निया जिवो टू अपस्किल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स officials explore real world use cases such as pest control in agriculture traffic monitoring nutritional analysis एगुडा सब application. Third, framework based governance training. Introduction to DMAIC define, measure, analyze, improve, control and smart specific measurable achievable relevant time bound ये जो keywords अछि पर लेटर कौन वर्ड रोजी आपको भी मने रखिथिबे एग्जाम स्पेसिफिक फॉर प्रिलिम्स इट इज इंपोर्टेंट नॉट फॉर मेंस बट फॉर प्रिलिम्स तो ए दीटा जो फ्रेमवर्क रहला डीएमएआईसी एंड जो स्मार्ट फ्रेमवर्क रहला आपको इनकलकेट करा जाई छै in structured problem solving. Vision kono Odisha AI mission ro the AI champion program is part of the roadmap under the Odisha AI mission discussed earlier aiming to make Odisha a leader or pioneer in AI driven governance or e-governance public service delivery pai for efficient public service delivery. Officials are expected to initiate pilot AI project and scale them for wider application across sectors.
मैटर कौन पाई करूची ओडिशा पाई एटा एते ओडिशा इज प्रोएक्टिवली एम्ब्रेसिंग एआई टू सॉल्व रीजन स्पेसिफिक गवर्नेंस चैलेंजेस आजिकली जितने एआई टूल्स आसीगला चैट जीपीटी और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ऊपर एमानकु ट्रेन करा जाउची तो दिस इज हाई टाइम कि ए सब टूल्स को यूज करिकी फर्दर गवर्नेंस को स्ट्रेंथेन करिवाटा तो ओडिशा इज प्रोएक्टिवली ओडिशा कोन करछि सेति पई एम्ब्रेस करूछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोएक्टिवली टू सॉल्व द रीजन स्पेसिफिक गवर्नेंस चैलेंजेस जहाँ भी सबू रीजन रो चैलेंजेस अलग अलग तो रीजन स्पेसिफिक जहाँ भी गवर्नेंस चैलेंजेस रोची धर रीजन ए रो जहाँ गवर्नेंस चैलेंजेस थिबो रीजन बी रो से गवर्नेंस चैलेंजेस नथिबो तो सेटा गोटे गैप क्रिएट करे तो रीजन स्पेसिफिक गवर्नेंस चैलेंज को केमिति सॉर्ट आउट करा जिवो तो ओडिशा एथिरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करूची कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आउ एटा केतेबेले पॉसिबल जेतेबेले ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट तांकर अपस्किलिंग होतिबो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होतिबो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन एआई टूल्स तो सेथिरे पॉसिबल कोन हबो टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस रिफॉर्म्स आसीबो जेतेबेले तांकर ट्रेनिंग हबो से माने सेति बेले ही सिखि परिबे कि एआई को इंटीग्रेट केमिति करिवार अछि गवर्नेंस बा एडमिनिस्ट्रेशन रे एआई को इंटीग्रेट केमिति करिवार अछि a model that other states could emulate in the digital India vision. Next अच्छी दारिंगबाड़ीज एग्री women power women empowerment उपरे women empowerment होची कोडी दारिंगबाड़ी रे अंडर मिशन शक्ति pushes for value addition in strawberries तीनटा जिनसर एठी ना निया जायछि गोटे होची स्ट्रॉबेरी गोटे होची टर्मरिक आ गोटे होची कॉफी एथिरे केमिति वैल्यू एडिशन होची अंडर मिशन शक्ति जो फल रे एग्री वुमेन मानकर एम्पावरमेंट होची दारिंगबाड़ी रे न्यूज रे कोन कहिछि मिशन शक्ति डायरेक्टर मणिका प्रियदर्शिनी विजिटेड दारिंगबाड़ी ब्लॉक इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट दारिंगबाड़ी टा कोडी अछि ब्लॉक दारिंगबाड़ी ब्लॉक इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट टू असेस प्रोग्रेस इन वुमेन लेड एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस वुमेन लेड एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस जते रहिला तार कोन प्रोग्रेस होउची कि प्रोग्रेस होउनी सेटा देखिबा को विजिट करितिले आउ वैल्यू एडिशन को केमिति फर्दर इनकलकेट करा जिवो केमिति ऐड करा जिवो स्ट्रेटेजाइज करा जिवो ए सब जिंस रे स्ट्रॉबेरी हे गला टर्मरिक कल्टीवेशन हे गला कॉफी कल्टीवेशन हे गला ए सब मेजर लोकल प्रोडक्ट्स रे केमिति वैल्यू एडिशन को फर्दर इंक्लूड आउ स्ट्रेटेजाइज करा जिवो सेटा भी डिस्कस हेतिला फर्स्ट हमें देखियो मिशन शक्ति कोन मिशन शक्ति इज इन न्यूज so it is very important to understand what mission shakti is mission shakti are manus empowering women in odisha आउ ए टॉपिक टा कहा अंडर रे आसुची जीएस2 सोशल जस्टिस अंडर रे आसुची इट इज रेलेवेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस मिशन शक्ति प्रीलिम्स रे भी आसी परिबो आउ मिशन शक्ति को वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर जहां भी क्वेश्चन आसीबो मेंस रे सेथिरे मिशन शक्ति को as an example show kari paribe okay तो overview कोन अछि मिशन शक्ति is a flagship initiative of the government of odisha रो गोटे flagship initiative aimed at empowering women through self help groups जो रहिला ता द्वारा कोन हबो women मानको empowerment हबो women मानकर empowerment हबो under को इनिशिएटिव मिशन शक्ति इनिशिएटिव अंडर रे मिशन शक्ति लॉन्च के बेइतला 2001 रे लॉन्च हेतला आपको फुल फ्लेज डिपार्टमेंट स्टेटस 2021 रे दिया गला आउ एटा कोन वुमेन लेड लाइवलीहुड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंटरप्रेन्योरशिप आउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एटा प्रमोट करे की ऑब्जेक्टिव्स कोन रहला मिशन शक्ति रो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू कोन होची वुमेन एम्पावरमेंट होची तो मिशन शक्ति रो ऑब्जेक्टिव होची कि केमिति से मोबिलाइज करिवो वुमेन माननकु into self-help groups into constructing or establishing self-help groups so that tankaro empowerment hei paribo au financial inclusion hei paribo society re financial inclusion au financial independence भी हेई परिबो सेकंड प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट एक्सेस तांगु लोन वोन एगुडा सब इजीली अवेलेबल हबो कैपेसिटी बिल्डिंग किबा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हबो मार्केटिंग सपोर्ट भी तांगु मिलिबो जा थ्रू रु कोन हबो फर्दर इट विल लीड टू एम्पावरमेंट थर्ड एनेबल
women led enterprises across agriculture, food processing, services and crafts आंकु बूस्ट मिलिबो ए सब जो वुमेन लेड एंटरप्राइज रहले एग्रीकल्चर रहला फूड प्रोसेसिंग सर्विस ए सब जिंस को भी बूस्ट प्रोवाइड हबो प्रमोट लीडरशिप ऑब्वियसली एते सब जिंस हबो त वुमेन मानकर इट विल प्रमोट द लीडरशिप ऑफ द वुमेन और पार्टिसिपेशन जो गवर्नेंस है ताकर पार्टिसिपेशन ताकर वॉइस इन डेमोक्रेसी it will also promote these major features कौन रही मिशन शक्ति over 70 lakh women organized into 6+ lakh SHGs across Odisha it already है सारे लाणी मिशन शक्ति involved in midday meal scheme रे मिशन शक्ति involved रही procurement of जो forest produce रो procurement of processing रे मिशन शक्ति involved रही forest produce कौन जो minor produce forest produce रहिला तार procurement आउ तार processing रे मिशन शक्ति रो cafes भी रन होची मिल्क एटीएम्स फूड यूनिट्स ए सब भी रन होची ताको सपोर्ट मिलुची मिशन शक्ति लोन्स थ्रू रु सपोर्ट मिलुची इंटरेस्ट सबवेंशन डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स थ्रू रु सपोर्ट मिलुची आ स्ट्रॉबेरी टर्मेरिक आ कॉफी इति जो मेंशन करा जे तांकर कल्टीवेशन ऑफ वैल्यू एडिशन तो सेथिरे की हाइलाइट्स कोन रहउची की हाइलाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन ने देखिया गले year round livelihood focus रोची स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन रे women SHG in दारिंगबाड़ी से माने कोन करछंदी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग टको सेठी से माने सक्सेसफुली सेठी कैरी आउट करूछंदी हाउएवर जेहेतु प्रोसेसिंग यूनिट नाही आ जेहेतु स्ट्रॉबेरी टा गोटे फ्रूट आ एटा पेरिशेबल इनकम टा सीजनल रहउची जेतोले प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश हे जिवो वैल्यू एडिशन हबो तो ए जिंसटा वेस्टेज वगैरह एगुडा सब हबनी आ इनकम टा भी ताकर सीजनल रहिबनी एटा ईयर राउंड हबो सेकेंड कंधमाल टर्मरिक कंधमाल हल्दी एटा जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर ए टैग ता ताको मिली सारची ग्लोबल रिकॉग्निशन जीआई टैग मिली गला माने कोन ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली गला फेमस कंधमाल टर्मरिक एटा मन रखिबे कंधमाल टर्मरिक को जीआई टैग मिली छी दारिंगबाड़ी कॉफी इंक्लूड अछि ए मिशन रे ए इनिशिएटिव रे From forest to cafe. Currently, coffee is grown organically in Daringbadi, but processed in Korapur. Daringbadi रे एटा grow होउची किंतु process होआ पई से एबे कोरापुर जाउची. तो प्लान होउची कि coffee processing unit टा जदी दारिंगबाडी रे सेटी create by establish कर दिया जिवो तो सेटा कोरापुर आउ processing पई न जाई कि सेटी से locally सेटी दारिंगबाडी रे processing हे परिवो आउ income generate करि परिवो सेटी locals मानक पई. फाइ दारिंगबाड़ी दारिंगबाड़ी को ही कोन पई एटा सिलेक्ट करा दिछि दारिंगबाड़ी को कश्मीर ऑफ ओडिशा कहउछंती आ दारिंगबाड़ी रे जो क्लाइमेटिक कंडीशन कोन कूल क्लाइमेट क्रॉप्स आइडियल फॉर कूल क्लाइमेट क्रॉप्स जो क्रॉप्स जो माने शीत दिने बा कूल क्लाइमेट रिक्वायर करंती ताकर ग्रोथ पई तो दारिंगबाड़ी सेटा प्रोवाइड करूची ड्यू टू इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्रो इकोलॉजिकल सुइटेबिलिटी मेक इट निश जोन फॉर ऑर्गेनिक कॉफी पढ़िले टर्मरिक विथ मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सीजन फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज दारिंगबाड़ी ठंडा हेतिबा जो स्ट्रॉबेरी नॉर्मली बाकी जगह कोन विंटर्स रे ग्रो करा जाए जेहेतु दारिंगबाड़ी रो क्लाइमेटिक कंडीशन टा ऑलरेडी इट्स कूल तो सेटा ऑफ सीजन फ्रूट जोटा स्ट्रॉबेरी रहला जोटा कि केवल विंटर्स रे अवेलेबल होची बाकी जगह माना करे तो सेटा जदी ईयर राउंड सेटी प्रोड्यूस हे परियो ड्यू टू इट्स कूल क्लाइमेट. While it matters, it reflects Odisha's focus on value addition in agriculture rather than just raw produce. खाली production होनी सेठी factories मध्य processing पई establishment होची value addition होची तो wastage कम रहउची perish होनी fruits and vegetables. So it ensures the value addition in agriculture, boost rural women incomes. तो जेतोले food processing unit खोली दिया जिवो जागा माना करे आउ एटा women led initiative टा तो एटी women मानकर income मध्य increase हबो which will promote the sustainable agri enterprise model, strengthen local identity and branding through processing and packaging. Local एरिया रे तर कोरापुट रे प्रोसेस होतला जदी दारिंगबाड़ी रे प्रोसेसिंग यूनिट खोली दिया जिवो तो सेटा दारिंगबाड़ी रे भी प्रोसेस हबो तो सेटा लोकल आइडेंटिटी को फर्दर सेटा स्ट्रेंथन करूची आ ब्रांडिंग को मध्य. मिशन शक्ति ऊपर एटी क्वेश्चन मो एटी प्रोवाइड करची फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चारटा जाक स्टेटमेंट को केयरफुली पढिबे एटी स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट चारटा जाक ऑप्शन केयरफुली पढिबे ठीक अछि
कमेंट सेक्शन रे आंसर देबे आर आंसर नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबी आज जेमती 5 टा क्वेश्चन रो मु डिस्कस कली प्रीवियस क्लास रो जा मु होमवर्क देइतली रसगोला दिवस ओडिशा स्वीट सेलिब्रेशन ऑफ नीलाद्री डीजे GS1 आर्ट एंड कल्चर रेलिवेंट फॉर प्रिलिम्स नॉट रेलिवेंट फॉर मेंस तो रसगोला दिवस कौन एटा सेलिब्रेट केबे होची नीलाद्री विजय आ व्हाट इज नीलाद्री विजय कौन जेतबेले कि लॉर्ड जगन्नाथ ताकर अलोंग विथ लॉर्ड बलभद्र और सुभद्रा सहित श्री मंदिर को से रिटर्न करती रथ यात्रा पर जेतबेले से फर्दर मौसी मंदिर ठू श्री मंदिर को रिटर्न करती से फेस्टिवल को कहा जाए नीलाद्री विजय आफ्टर द एनुअल रथ यात्रा. On this occasion, Lord Jagannath offers rasagolas to Goddess Lakshmi to appease her for being left behind during the Rath Yatra, the ritual act that has come to define the festival. Simple, nothing to understand. Historical or cultural significance कौन रोची? The practice dates back to 12th century. 12th century रो ये practice टा चली आसी making रसगोला और the क्षीर मोहन जगन्नाथ टेम्पल tradition रो एटा part गोटे tradition was formalized in 2015. 12th century चली आसी formalize होला 2015 रे as रसगोला दिवस कौन पे? To assert Odisha's claim over the sweet and amid wider origin debates. 2019 रे Odisha secured geographical indication tag for its version of रसगोला reinforcing 2019 रे GI टैग मिला रसगोला को ओडिशा रसगोला को GI टैग मिला. बस से करंट अफेयर्स रे सेतिकी ही थिला एंड एटा गोटे एटा होची GS3 रा करंट अफेयर्स. Nothing much about the previous current affair, just some facts to remember. It's as simple as that. So moving on to this GS3 environment specific or environment relevant current affairs जोड़ा होची government launches rooftop gardening campaign. ए rooftop gardening campaign रे कौन है जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर रहिले एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहिले कनक वर्धन सिंह देव सी गोटे स्टेट वाइड स्टेट रे गोटे रूफटॉप छात ऊपर गोटे गार्डनिंग कैंपेन सी लॉन्च करिसेंती. कोठे लॉन्च हेची फ्रॉम कृषि भवन भुवनेश्वर. एम कोन ए पर्टिकुलर थिंग लॉन्च बाय कैंपेन लॉन्च बा पछर तर एम कोन टू प्रमोट अर्बन ग्रीनरी. अर्बन एरियाज रे तो सेते ओपन स्पेस कि सेते बिलवाड़ी नै रूरल एरिया को माने कंपैरिजन रे कि सेठी से माने गार्डनिंग करि परिबे कि कल्टीवेशन करि परिबे तो सेटा प्रमोट कोडी होजी छात ऊपर करि परिबे. प्रमोटिंग अर्बन ग्रीनरी एंड सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. की हाइलाइट्स ऑफ द कैंपेन. हाइलाइट कौन ऑब्जेक्टिव कौन रोची अर्बन एरिया से रैपिड अर्बनाइजेशन जो होची तो रैपिड अर्बनाइजेशन रे कौन होची फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीन कवर रहिला ग्रीन कवर लॉस होची गछ कटा जाउची अर्बन एरियाज फॉर्म होची रैपिड अर्बनाइजेशन रे एटा क्लाइमेट चेंज को ये फर्दर कौन करूची एक्सेलरेट इट फर्दर एक्सेलरेट्स द क्लाइमेट चेंज. तो आपको कम्बैट करिबा पई आपको रोकिबा पई जो ग्रीन कवर रो लॉस होची तो ए कैंपेन टा लॉन्च करा जायछि इन व्हिच एरियाज इन अर्बन एरियाज बाय प्रमोटिंग रूफटॉप छात ऊपर कि होम गार्डनिंग भी से माने करि परबे यूजिंग इनोवेटिव हॉर्टिकल्चरल टेक्निक्स. कवरेज रोची 5 फर्स्ट सेटा पायलट बेसिस रे लॉन्च हेछि. एटा फर्स्ट 5टा सिटी रे एटा लॉन्च हेछि. को सिटी रे भुवनेश्वर कटक संबलपुर बरहमपुर एंड जयपुर.
पायलट बेसिस रे को सिटी रे लॉन्च हेची एटा एटा मने रखि देबे नोट कर नियंतु भुवनेश्वर रे हेची कटक संबलपुर बरहमपुर जयपुर प्रिलिम्स रे कंफ्यूज करबा को ए पांचटा भितरु गोटे रिप्लेस करिके आ गोटे किछि गोटे से सिटी पकेई देबो एंड आपण जदी ठीक से रिवीजन नथिबो कि मने नथिबो देन यू विल टिक द मार्क द रॉन्ग आंसर सेकेंड will later expand to other cities first एठी जेतबे जदी एटा सक्सेसफुल हे गला तापर अदर सिटीज को एक्सपैंड कर दिया जिवो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन रोची ए पर्टिकुलर कैंपेन को इम्प्लीमेंट किए करूची सेंट्रल हॉर्टिकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन आईसीआर आईआईएचआर भुवनेश्वर एटा को से इम्प्लीमेंट करूची आ एटा को प्लान अंडर रे आसी स्टेट प्लान स्कीम अंडर रे आसुची इनोवेटिव प्रोजेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ अर्बन हॉर्टिकल्चर एटा गोटे प्लान आ अंडर रे आसुची ए रूफटॉप गार्डनिंग कैंपेन टा फंड किए दोची ए कैंपेन को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट रू रूफटॉप गार्डनिंग कैंपेन को फंड जाउची कैंपेनिंग टूल्स mobile awareness vehicle equipped with audio visuals interactive kiosks technical exhibits on rooftop gardening methods eso awareness tools provide कर दिया जाय छै to facilitate the campaign future plan कोन रही छै campaign संगे ताकर vision कोन छै future plan कोन छै लॉन्च ऑफ एन एनुअल रूफटॉप गार्डनिंग कंपटीशन कैंपेन फर्स्ट लॉन्च हे गला समस्त ग्रो करि नेले जे गार्डनिंग कले कि रूफटॉप गार्डनिंग कले विथ इनोवेटिव हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस तापरे सेटा गोटे कंपटीशन हबो एनुअली कंपटीशन हबो त एनुअली जेतबे कंपटीशन हबो कि जेतबे प्राइज डिस्कस हबो कि प्राइज प्रोवाइड करिवे से माने त सेतरे कोन हबो सेतरे गोटे ताको गोटे मोटिवेशन मिलिबो जेतबे जेतबे प्राइज की कंपटीशन हबो तो फर्दर मोटिवेशन मिलिबो टू कैरी सच थिंग्स सेकंड एक्सपर्ट लेड सेशंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट्स भी रहिबो पीपल टू पीपल कम्युनिटी एंगेजमेंट इवेंट्स भी रहिबो एक्सपर्ट लेड सेशंस रहिबो जोटी एक्सपर्ट माने आसी कि तांगर नॉलेज शेयर करिवे स्केल अप अक्रॉस मोर अर्बन एंड पेरी अर्बन सेंटर्स अर्बन और पेरी अर्बन सेंटर रे आहुरी स्केल अप करिबा तर फ्यूचर प्लान रही छै ओडिशा पई एटा कोन पई व्हाई दिस रूफटॉप गार्डनिंग कैंपेन एटा ओडिशा पई एते मैटर कोन पई करछ ओडिशा पई एते रेलेवेंट कोन पई फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हीट आइलैंड इफेक्ट तो ए सब को मिटिगेट करबा पई अर्बन हीट आइलैंड को मिटिगेट करबा पई ग्रीन रूफ ए कोन करबो सिटी रो टेंपरेचर को जे सिटी रो टेंपरेचर जोटा स्काई रॉकेट होची सेटा को से रेगुलेट करबा सेटा को से लोअर करबा तो सिटी टा माने सिटी टा कूल रहइबो सेकंड एनहांसेस फूड सिक्योरिटी थ्रू होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स एटा फूड सिक्योरिटी एनफोर्स करूची थ्रू होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स थ्रू हॉर्टिकल्चर थर्ड एटा सिटीजन लेड सस्टेनेबिलिटी को एनकरेज करबो मु कहली एटी रूफटॉप गार्डनिंग रो कंपटीशन रहबो जदी प्राइज से माने घोषणा कले तो एटा आहुरी तमु एनकरेज करबो मोटिवेट करबो टू ट्राई दीस थिंग्स टू कैरी ऑन दीस थिंग्स एंड इंप्रूव्स अर्बन लिवेबिलिटी अर्बन एरियाज रे जते पोल्यूशन रोची अर्बन हीट आइलैंड रोची जते टेंपरेचर अधिका रोची तो सेटा कोन करची सेटा लिवेबिलिटी को डिक्रीज करूची तो एमिडिया इनिशिएटिव रे अर्बन लिवेबिलिटी एटा इंक्रीज हबो इंप्रूव हबो अलाइंस विथ द ओडिसा's विजन 2036 फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज तापर करंट अफेयर्स तापर न्यूज रे अछि GS2 पॉलिटी पाई इंपोर्टेंट एठी गोटे इंफॉर्मेशन कमिशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन रो न्यूज अछि जोटा कि ओडिशा इंफॉर्मेशन कमिशन आ ओडिशा इंफॉर्मेशन कमिशन कोन करूची जो लॉ इंटर्न्स रहिले जो माने लॉ परिसरी जो माने इंटर्नशिप करूचंदी से मानको राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर रे ट्रेन करूची
न्यूज रे कोन अछि ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन गोटे इंटर्नशिप प्रोग्राम से तार स्टार्ट करिछि लॉ स्टूडेंट मानक पई तांकू प्रैक्टिकल एक्सपोजर दबा कहा कहा अंडर रे टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन कोथ में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पाइका तांकू गोटे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जिवो थ्रू एन इंटर्नशिप प्रोग्राम आ एटा प्रोवाइड करूची किए आकु प्रोवाइड करूची ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन तो एटा फर्दर आर एम कोन इट्स एम इज गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी governance transparency key details internship ro scope students attend hearings and observe disposal of the RTI cases RTI under jaha bhi सब cases aschi तार hearings से माने attend करि परिबे disposal को observe करि परिबे जो टाइम रे होची सेही टाइम रे observe करि परिबे रियल टाइम बेसिस रे गेन हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग आरटीआई हाँ आरटीआई रो जहाँ भी सब प्रोविजंस अछि आरटीआई अंडर जहाँ भी सब पॉइंट्स अछि कि कौन हबा दरकार कौन न हबा दरकार लीगल प्रोसीजर्स जहाँ अछि आउ इन्फॉर्मेशन कमिशन्स आरटीआई अंडर जो माने सब रहिले तांकर रोल कौन रहउछि टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस इन द इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूटिंग वैलिड इन्फॉर्मेशन दोज हु हैव डिमांडेड तो तांकर रोल कौन रहउछि ताकू बुझिबारे भी ताकू बुझिबारे भी ए इंटर्नशिप गोटे पार्ट ए इंटर्नशिप हेल्प करूची स्टेट इन्फॉर्मेशन ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन इज इन न्यूज सो इट्स इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन मीन्स स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन अंडर कौन कौन की पॉइंट्स आसुची बेसिक तार गोटे आइडिया थिबा दरकार फर्स्ट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन केबे एस्टैब्लिश हला आउ कहा अंडर से एस्टैब्लिश है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन फर्स्ट द सेक्शन 15 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 रे अंडर रे सेटा प्रत्येक स्टेट रे इंडिया रो से एस्टैब्लिश हेजी कॉन्स्टिट्यूट हेजी तार रोल कोन रहउची से गोटे अपीलेट अथॉरिटी से अपील हियर करे इट हियर्स अपील्स जहाँ अपील आसे आ कंप्लेंट आसे रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट हेगला राइट टू इन्फॉर्मेशन धर किए इन्फॉर्मेशन किछि जिनस पई दरकार से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट पकेइतले किंतु ताकर रिक्वेस्ट फुलफिल हैला नाही कि इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स वैकेंसी अछि तो एसो बाबद रे जेते भी राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बाबद रे जेते भी अपील्स रहला जेते कंप्लेंट्स रहला तो सेटा आंको पाखो को आसे कंपोजिशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर गोटे रहिबे आउ 10टी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स रहिबे अप टू 7टा ही परंती 8टा ही परंती ठीक अछि अपॉइंटमेंट किए करिवो बाय गवर्नर निज इच्छा रे तो अपॉइंट करि परिबेनी अपॉइंट करिया पई गोटे कमिटी बसिबो आ से कमिटी रो किए पार्ट हेबे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहिबे से कमिटी रो चेयरपर्सन देन लीडर ऑफ अपोजिशन रहिबे आउ गोटे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर रहिबे आंकु नै कि गोटे कमिटी गठन हबो आ से कमिटी जहा गवर्नर को रेकमेंड करिवो गवर्नर सेही हिसाब रे इन अपॉइंट करिवे जहा को अपॉइंट करिवे सेही हेबे फंक्शन कोन रहउची पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो पीआईओज रहिले से माने धर कहार इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट को फुलफिल कले नहीं तो ताकू जहा सेठू जहा भी कंप्लेंट्स कि अपील्स आसिला ताकू कंसीडर करिबा होची आंकर गोटे वन ऑफ द फंक्शन प्राइमरी फंक्शन सेकंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट इन द पब्लिक अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटी मानकरे आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंट होची कि नै ताको मॉनिटर करिबा आउट आरटीआई एप्लीकेशन जो माने अप्लाई करछन्दी आरटीआई में राइट टू इन्फॉर्मेशन पाई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट से माने अप्लाई करछन्दी टाइमली डिस्पोजल एटा एन्श्योर करिबा कि जेते बळे देई देवा कथा इन्फॉर्मेशन धर 10 दिन रे लेखा आइछि कि इन्फॉर्मेशन दिया हबो बोली आउ सेटा 10 दिन रे ही केमिति दिया जीव एटा को टाइमली डिस्पोजल एटा को एन्श्योर करिवाटा आंकर वन ऑफ द फंक्शन आउ इन्फॉर्मेशन विथ कॉम्प्लायंस विथ द प्रोविजन जहा जहा आरटीआई एक्ट रे प्रोविजन रहिछि सेथि प्रति कॉम्प्लायंस करिकि ताकू मानि कि एतिके दिन भितरे जदि मेंशन हेछि सेतिके दिन भितरे एफिशिएंटली इन्फॉर्मेशन ता केमिति प्रोवाइड करी दिया जीव आकू एन्श्योर करिबा
power equivalent to those of civil court during inquiry, summon witnesses, demand documents, etc. Right to Information Act. एते कथा हमें जानिले स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन हिसाब रे आउ सी कोन तार प्राइमरी फंक्शन सबु जिंस इट रिवॉल्व्स अराउंड द राइट टू इनफॉरमेशन तो एबे राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट कोन तार की पॉइंट्स तार ऑब्जेक्टिव कोन रोची राइट टू इनफॉरमेशन रो टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को मान को भीतर इन गवर्नमेंट आउ सेटा केमिति एनफोर्स होबो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी by empowering the citizens to access information from public authorities. citizen मान को ए प्रोविजन द्वारा ए एक्ट द्वारा एम्पावर करा जाय छी कि जे कोन से पब्लिक अथॉरिटी रो कोन से स्टेप कि किछि इन्फॉर्मेशन दरकार हैला तो सेटा से माने डिमांड करि परिबे अंडर आरटीआई प्रोविजंस. तो एथिरे कोन बढ़िबो एथिरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मानकर अकाउंटेबिलिटी बढ़िबो रिस्पांसिबिलिटी बढ़िबो एंड इट विल एनफोर्स द आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स देयर सिटीजंस. तो एटा गोटे कोन करिवो गोटे ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट बिटवीन द गवर्नड एंड द गवर्नमेंट. एप्लीकेबिलिटी ऑल सेंट्रल आउ तार भी किसी एप्लीकेबिलिटी अछि एमी नै कि मन इच्छा जहाँ भी इनफॉरमेशन से माने मागी परिबे को मानक प्रति से इनफॉरमेशन मागी परिबे ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज को रिगार्डिंग से माने इनफॉरमेशन मागी परिबे इंक्लूडिंग बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट जो जे कोनोसी बॉडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छड़ी के जे कोनोसी बॉडी द्वारा सेंटर की गवर्नमेंट द्वारा सेंटर की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा से फाइनेंस होची फंडेड होची तांको रिगार्डिंग भी इनफॉरमेशन डिमांड करा जाय परिबो. की प्रोविजंस कोन होची सिटीजन्स कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट टू सीक इनफॉरमेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज. सिटीजन माने आरटीआई रिक्वेस्ट से माने सीक करि परिबे फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज डिस्कस्ड अर्लियर एबे मु डिस्कस कली बहुत थरा. Public information officers must respond within 30 days. This is the timeline. 30 days मन रखिबे एग्जाम रे 18 days दे दबो 20 days दे दबो नो इट इज 30 आ भीतर रेस्पोंड करिवार अछि को माने को रेस्पोंड करिवार अछि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स माने को रेस्पोंड करिवार अछि टू सिटीजन्स. अपील्स मेकानिज्म एट स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन एंड सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन जदि रेस्पोंड कलेनी तो कंप्लेंट कोडी की जीवो अपील कोडी की जीवो स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन को जीवो बाय सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन को जीवो डिस्कस्ड अर्लियर इन प्रीवियस स्लाइड्स. प्रोटेक्शन ऑफ whistleblowers and provisions against refusal of information except in certain exempted cases. whistleblowers माने को प्रोटेक्शन दिया जीवो आउ सर्टन केसेस रे इनफॉरमेशन मध्य रिफ्यूज करि परिबे धर इंटरनल सिक्यूरिटी देशर इंटरनल सिक्यूरिटी रिलेटेड कि इंटेलिजेंस रिलेटेड से मन इच्छा इनफॉरमेशन सिटीजन माने मागी परिबेनी तो सेही सब केस रे एमती सेंसिटिव केसेस रे सर्टन केसेस रे एग्जाम्प्ट भी करा हेची प्रोविजन अंडर रे कि इनफॉरमेशन जो डिमांड करा जि ताको रिफ्यूज करि दिया जाई परिबो. तार इंपैक्ट कोन हबो स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रेंथन हबो ट्रांसपेरेंसी बढ़िबो अकाउंटेबिलिटी बढ़िबो एनेबलिंग सिटीजन टू मॉनिटर गवर्नमेंट एक्टिविटीज. सिटीजन माने जेतोले मॉनिटर करिवो गवर्नमेंट एक्टिविटीज गवर्नमेंट कोन करूची कोन स्टेप नउची कोन कोन सब पदक्षेप नउची डिफरेंट एरियाज को नेकी तो सेटा को से मॉनिटर करि परिबे एंड तो एथरे कोन हबो as I have said accountability बढ़िबो answerability will increase and which will reduce the corruption. Significance. It enhances the practical understanding of the RTI Act beyond the textbook. ये जो internship टा हबो ए इंटर्नशिप स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट्स मानो को जो ट्रेनिंग टा प्रोवाइड करा जो जो ओआईसी होस्ट करिवो फॉर आरटीआई ट्रेनिंग तो एथरे गोटे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आसीबो आ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग थर ऑलवेज बेटर. सेकंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन लीगल थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस. अगेन बही रे जोटा पढिथिबे जोटा थ्योरी पढिथिबे एटा जेतेबेले से माने ग्राउंड लेवल रे जेतेबेले प्रैक्टिस करिवे हियरिंग सुनिबे डिस्पोजल ऑफ केसेस सुनिबे तो सेटा जो नॉलेज गैप टा रहूची लीगल थ्योरी आ प्रैक्टिस भितरे सेटा close ही परिबो से गैप टा. Thirdly, it promotes transparency and accountability in public institutions discussed earlier by nurturing informed citizens and future lawyers. Fourth, supports the larger goal of open governance, citizen empowerment enshrined in the RTI Act. Question number 4 is on State Information Commission.
जहाँ जहाँ देइछि मु एठी स्टेटमेंट्स रे मु सब एबे डिस्कस कली किछि भी बाहरु नाही and you have to select the correct answer from these four options. Statement 1 2 3 4 carefully पढ़िबार अछि और ऑप्शन जाक केयरफुली पढ़ी की कमेंट सेक्शन में आंसर देबार अछि. Vanishing land, Kendrapada's battle with coastal erosion. GS3 environment पाई important. Coastal erosion. फर्स्ट न्यूज कौन कौन देखा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे से कौन कौन थ्रेट फेस करूछन फ्रॉम व्हाट फ्रॉम कोस्टल इरोजन. एडी पिक्चर रु टिके आइडिया एटी नेबे कोस्टल इरोजन टा कौन एटी पानी माडी आसुची आ एटी कोस्ट एटी पछकु जाई चलची तो एटी कौन होची इरोजन होची. Exacerbated by rising sea levels and climate change impacts, large part of the district coastlines are gradually disappearing. एटी जेतले कोस्ट को ये समुद्र एटी खाई खाई चली ची कोस्टल इरोजन रे तो एटी कोन होची एटी डिसअपियर होची कोस्ट. आगुरु धर एतिकी थिला सेबे एतिकी नै एतिकी पछकु घुंची आसलाणी. तो एटा होची कोथि पई सी लेवल राइज कले हबो वेव एक्शन. सी लेवल राइज कले वेव एक्शन बढ़िबो. वेव एक्शन कहा ऊपर प्रभाव पकेबो कोस्ट ऊपर प्रभाव पकेबो. क्लाइमेट चेंज रे इंपैक्ट रु एगुडा सब पॉसिबल होची. पोजिंग सीरियस चैलेंज टू लोकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम. जहां भी इकोसिस्टम की एथी जहां भी लोकल कम्युनिटीज रहउतिबे तो तांको पई एबे विपद. कोस्टल इरोजन कोन व्हाट इज कोस्टल इरोजन. एटा गोटे नेचुरल प्रोसेस of gradual wearing away of land. Here the land is wearing away along the coast due to wave action, current, tides, sea level rise. Causes कौन कोस्टल इरोजन रो फर्स्ट होची क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज रे थर्मल एक्सपेंशन होची बा मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स ए सब रे कोन होची सी लेवल इंक्रीज होची वेव एक्शन बढ़ुची आ कोस्ट पछको डिसिपेट हेई चले छी. कोस्टल इरोजन बढ़ुची. ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज होची कोन पई बिगेस्ट रीजन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज. धर कंस्ट्रक्शन हे गला किछि भी तर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्दर इंपैक्ट कोन अब विदाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो कंस्ट्रक्शन गुडा रहउची फॉल्टी कंस्ट्रक्शन रहउची इलीगल कंस्ट्रक्शन रहउची सेति प्रति होउची. सैंड माइनिंग होउची इलीगल सैंड माइनिंग बा ड्रेजिंग सेथिरे भी कोस्टल इरोजन होउची. देन स्टॉर्म सर्जेस हेगला केबे स्टॉर्म आसिला कि हाई एनर्जी वेव हैला कि साइक्लोनिक एक्टिविटीज रे भी कोस्टल इरोजन हुए. इंपैक्ट लॉस ऑफ लैंड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज जो माने रहिले जो लोक माने सेठी रहउतिबे कोस्टल कम्युनिटीज जेतबले लॉस ऑफ लैंड हैला ताकर डिस्प्लेसमेंट सेटु हे जिवो से माने सेठी छडी आउ कोडी पळेबे माइग्रेट करिकि. सेकंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी लॉस. मैंग्रोव फॉरेस्ट रो डिस्ट्रक्शन होची बायोडायवर्सिटी लॉस होची. कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट्स पाई मध्य थ्रेट. जदि कोनोसी कोस्टल इरोजन होची आ जदि कोनोसी हिस्टोरिकल बा कल्चरल साइट सेठी होची तो तार मध्य डिस्ट्रक्शन हे जिवो तो सेटा भी गोटे थ्रेट. इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स होम्स पोर्ट्स एको भी डैमेजिंग. एग्रीकल्चरल लैंड और लाइवलीहुड. increase disaster vulnerability flooding saline intrusion. coastal erosion रे कोन हबो disaster vulnerability बढ़ी जिवो. तो आकु मिटिगेट बा अडाप्ट केमिति करा जिवो कोस्टल इरोजन को किछिटा स्ट्रेटजी जेठी डिस्कस हेई जे. फर्स्ट natural strategies through और artificial strategies through. Natural strategies clubbed with artificial strategies, coastal erosion can be mitigated. First, mangrove afforestation. Natural growth mangrove जेतबळे mangrove trees जेतबळे plant हेबे तो से माने act करिवे गोटे natural barrier हिसाब रे तो जोटा कि रोकिबो काहाकू coastal erosion को सेटा रोकि परिबो. Then coastal zone management. कोस्टल जोन जेतबळे मैनेज हबो धर जोन रे डिवाइड करि दिया जिवो
तो सेटा बैलेंस कर दबा नेचुरल इट बैलेंसेस द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड को बैलेंस करिक जदी कोस्टल जोन डिवाइड कर दिया जीवो सेटा अडाप्टेशन आउ मिटिगेशन प्रोवाइड करिवो फ्रॉम कोस्टल इरोजन आउ जेमति रहिला जेमति सी वॉल्स रो फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन ग्रोइंस आउ जियो ट्यूब्स एम्प्लॉय स्ट्रक्चर्स फॉर द कोस्टल प्रोटेक्शन ए सबुर कंस्ट्रक्शन आ जो माने ऑलरेडी डिस्प्लेस हेई सारचंदी जो कम्युनिटी जो माने छाड़ी जाई सारचंदी कि जो माने को क्षति हेई से माने को रिलोकेशन बाय रिहैबिलिटेशन ठीक अछि से माने को थ्रेटेंड एरिया जो कोस्टल इरोजन होउची जोटी से माने को सेठु नै कि अलगा जगह रे रखिबा ताको रिहैबिलिटेट करिबा ताको रिलोकेट करिबा एटा भी इंपोर्टेंट टू डिक्रीज द लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी remote sensing and GIS tracks erosion using technology जेतबेले erosion real time basis रे track होबो तो further steps ताकू रोकिया पई efficiently निया जाई परिबो तो एथि पई remote sensing आउ GIS यूज करा जाई परिबो Moving on to next current affairs, Odisha reintroduces pass-fail system for class 5th and 8th. न्यूज रे कोन गोटे मेजर शिफ्ट आसी छि एलिमेंटरी एजुकेशन पॉलिसी रे कहा द्वारा ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा जोटा कि अमेंड करछि द रूल को अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010 अंडर रे पास फेल सिस्टम जोटा कि उठी जाइथिला सेटा को पूरी थर रिस्टोर करा जाइछि फॉर व्हिच क्लासेस क्लास 5th एंड 8th स्टूडेंट्स रिप्लेसिंग द प्रीवियस नो डिटेंशन पॉलिसी आगु नो डिटेंशन थिला कि फेल करा जाय परिबनी से ऑटोमेटिकली प्रमोट हे जिवे हायर क्लासेस को सेटा हबनी नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाई दिया जाइछि आ पास फेल सिस्टम फर्दर रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाइछि कोन चेंज हेछि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 and 8 will now be accessed through annual examination. Annual examination जो माने पास करिवे से माने 6th क्लास को जिवे आउ 9th क्लास को जिवे आ जो माने फेल हेबे से माने फर्दर रिटेन रहिबे ए क्लासेस रे. Second, those who fail will get remedial instruction and a re-exam within 2 months. से माने ए क्लासेस रे रहिबे आ ताका पई remedial instruction दिया जिवो आ within 2 months तांकर आउ थरे re-exam करा जाई परिबो so that it will give a chance to promote to a higher class or higher standard. If the student fails the re-exam too, the re-exam रे student पूरी तरह fail हे गला, then he or she will be detained in the same class से पूरी तरह वर्षे रहिबे. No expulsion clause. ए सिस्टम रे गोटे क्लॉज अछि गोटे अछि नो एक्सपल्शन क्लॉज. नो स्टूडेंट कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. धर से माने फेल हे गले तो से मान को स्कूल रु बाहर करा जिवो नाही. ठीक अछि until completion of the elementary education up to class 8th. क्लास 8th जाके स्कूल रो बाहर करा जाई परिबो नाही से मानको एक्सपेल हेई परिबे नहीं से माने डिटेन रहिबे सेही सेम क्लास रे रहिबे 2 मास भीतर एग्जाम रे जदी से माने पास न कले ताले पुनी वर्ष रहिबे पुनी एग्जाम देबे किंतु स्कूल रो ताको एक्सपेल करा जाई परिबो नाही. लीगल बेसिस आउ ए स्टेप टा कहा अंडर इंप्लीमेंट हबो इट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू अमेंडमेंट्स टू ओडिशा आरटीई रूल्स 2010. एटा अलाइन होची 2019 और 2023 रे जो अमेंडमेंट आसीथिला आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 पई यूनियन गवर्नमेंट रे जो अमेंडमेंट आसीथिला जोटा कि स्टेट को अलाउ करिथिला टू ब्रिंग बैक एग्जाम्स एंड डिटेंशंस तो एटा तारी अंडर रे अलाइन आउ इंप्लीमेंट हेची. चेंज कोन पई हठात चेंज टा कोन आगुरु तो नो डिटेंशन पॉलिसी थिला कोन हेला जे को चेंज करिवा को पड़ला. कंसर्न्स ओवर लर्निंग आउटकम्स क्लास रे जहा पढ़ा जाउची आउ तार आउटकम्स जहा एग्जाम रे देखिबा को मिलिला स्टूडेंट मानकर दैट इज सेथि पई कि लर्निंग आउटकम्स पई कि जेको चेंज करा जाईची. आज पर परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्वे करा जाईतिला परख अंडर रे जो सर्वे करा जाईतिला सेतरे देखा गला कि ओनली 55% ऑफ द क्लास 3 स्टूडेंट्स कैन अरेंज नंबर ऑफ टू 99. क्लास 3 रे मात्र 55% स्टूडेंट ही
99 जाए नंबर अरेंज करि पारले जोटा कि वेरी कंसर्निंग क्लास 6th रे 53% स्टूडेंट्स ओनली दे नो मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 आउ बाकी माने को आसु नथला सो द लर्निंग आउटकम इज पुअर सेति पई चेंजेस होना जायछि द नो डिटेंशन पॉलिसी वाज ब्लेम्ड फॉर पुअर फाउंडेशनल लर्निंग तो एठी कोन फाउंडेशन वीक हे गला तो फर्दर से माने हायर स्टडीज रे बेटर परफॉर्म करि परिबेनी तो एठी तांगर जोड़ा ह्यूमन रिसोर्स सेटा ठीक से डेवलप हे परिबोनी as students we are being promoted without mastering basic skills correct the goal kon rahi improves academically accountability promote minimum learning levels and prepare students better for higher education discussed question number 5 on parak with reference to parak recently in news consider the following statements it is a national level assessment framework launched by ministry of education charta statement rahi accordingly charta option rahi do attempt the question and comment in the comment section Ikatan OTV Group's initiative to revive Odisha's Ikat heritage. Kaha under relevant? GS paper 1 Art and Culture. Art and Culture for prelims. News रे कोन अछि OTV Group Ikatan एटा गोटे इनिशिएटिव जोटा कि लॉन्च करा जायछि OTV Group अंडर रे ए इनिशिएटिव टा कोन एटा गोटे पर्पस ड्रिवन इनिशिएटिव पर्पस कोन रहला ए इनिशिएटिव रो ओडिसा रो जो ट्रेडिशनल इकत वीविंग जो बुणा रहला आउ से वीविंग जोटा करू जदी जो आर्टिसंस माने रहले ताको एम्पावर करबा आउ ए इकत वीविंग जोटा ओडिसा रो गोटे ट्रेडिशनल वीविंग ताको रिवाइव करबा आ रहउची पर्पस केमिति रिवाइव होबो डिजिटल फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे रिवाइव होबो initiative ro key highlights kon rahi purpose to revive preserve and promote the ikat weaving tradition of Odisha which has ikat weaving tradition jo buda moni seta ti under represented rahi jaichi joda other handlooms rahila jemdi banarasi rahi gala chanderi rahi gala excuse me तो तांको तुलना रे एटा टी अंडर रिप्रेजेंटेड रही जाइछि इकत वीविंग ट्रेडिशन टा ओडिसा रो प्लेटफॉर्म एटा को प्लेटफॉर्म रे आकू प्रमोट करा जिवो आउ इनिशिएटिव टा को प्लेटफॉर्म रे लॉन्च करा जाइछि लॉन्च्ड बाय www.ikatan.com आउ ए वेबसाइट रे गले एथि ऑथेंटिक हैंड वोवन इकत सिल्क साड़ी मिलुची तो डायरेक्ट एटा कोन करछि जत्ते बळे जणे जाई कि डायरेक्ट वेबसाइट रो परचेज करि परिबो एटा डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दोछि फॉर वीवर्स माने एठी डायरेक्ट लिस्ट करिक तांगर प्रोडक्ट को डायरेक्ट से माने बिकी परिबे तो एटा एनश्योर करूछि फ्री ट्रेड फेयर ट्रेड जत्ते बळे कि मिडल मैन इंक्लूड रहउनांती डायरेक्ट वीवर्स माने आकु एक्सेस करि परिबे डायरेक्ट मार्केट एक्सेस करि परिबे थ्रू दिस वेबसाइट एटा एनश्योर करूछि फेयर ट्रेड एंड ग्लोबल रीच Product lines कौन रोचे डिजाइनर कोलैबोरेशन विद ग्लोबल फैशन डिजाइनर विभू महापात्र टू एलिवेट इकत टू इंटरनेशनल रनवेज रे आकु प्रमोट करा जिवो with the help of whom विभू महापात्र जे कि गोटे ग्लोबल फैशन डिजाइनर तांको संगे कोलैबोरेट करिकी a more affordable non-designer like to make authentic handloom accessible to wider public a wider public मानको पई accessible रहिबो जोटा कि नॉन डिजाइनर लाइन रहिला कि जो बट स्टिल ऑथेंटिक हैंडलूम्स और वीविंग मेड बाय द आर्टिसंस ऑफ इकत नॉन डिजाइनर लाइन वाइडर पब्लिक मानको पई एक्सेसिबल रहिबो ई कॉमर्स मॉडल ता इथे ई कॉमर्स मॉडल थ्रू रो एटा प्रमोट होची जोटा कि फोकस करूची डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी ऊपर ग्लोबल विजिबिलिटी पई जेते बळे गोटे प्रोडक्ट कोलैबोरेशन थ्रू रो हो कि लिस्टिंग थ्रू रो हो गोटे वेबसाइट रे डिजिटली जेते बळे लिस्टेड हे जाउची त तार ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ी जाउची
future physical store considered, but current model ensures direct reinvestment into artisan ecosystems. आगो को जाइए स्टोर्स फिजिकली दुकान मान भी खोला जाई परिबो कि एबे जो करंट मॉडल जुड़ा चली छी एटा जहां भी प्रॉफिट हबो सेथरु सेटा डायरेक्ट री इन्वेस्ट करि दिया जिवो इनटू आर्टिसन मानकर जो इकोसिस्टम रहला सेथरे री इन्वेस्ट कर दिया जिवो एटा को इकतन जोड़ा रहिला इनिशिएटिव टा और इकत हेरिटेज रहिला ए ब्रांड रो फिलोसफी कोन इट मींस to bind or tie, symbolizing the connection between tradition and innovation मध्यरे जो binding और tie up अछि ताको symbolize करूची. आर tagline woven the heart tied by purpose. Tagline मने रखिबे important for prelims. About Odisha Ikat. ओडिशा इकत ऊपर किछटा पॉइंट रे 5-6टा खंडे पॉइंट देखिबा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पाई ए फॉर्म ऑफ रेजिस्ट डाइंग टेक्निक गोटे डाइंग टेक्निक जोडा रेजिस्ट डाइंग कोचनी सेटा यूज होची इकत रे वेयर द yarn is tie dyed before weaving. सेकंड लोकलिया को कोन कोचनी बंध बोली कोचनी तार मेन सेंटर कोडी कोडी संबलपुर रे अछि बरगढ़ सोनपुर नुआ पाटना रे अछि आ ओडिसा रे इकत को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मध्ये मिलिछि recognize for complex designs तार complex रहउची vibrant bright color रहउची vibrant colors रहउची deep cultural symbolism रहउची ठीक अछि ओके देन इकतन इनिशिएटिव ऊपर गोटे क्वेश्चन अछि तीनटा जाक स्टेटमेंट पढिबे तीनटा जाक ऑप्शन पढि के आंसर करिवे कमेंट सेक्शन रे इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द आंसर्स ओडिशा स्टेट लॉ कमीशन holds first meeting GS2 पॉलिटी पाई इंपोर्टेंट स्टेट लॉ कमीशन ऊपर न्यूज अछि हेल्ड इट्स इनागुरल मीटिंग तोसाली भवन रे इनागुरल मीटिंग हेछि तो ऑपरेशनल लॉन्च हला तो सेति पाई मीटिंग हेछि चेयर पाई किए जस्टिस चेयरमैन किए विश्वनाथ रथ चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट डायरेक्ट ऑप्शन आसीबो प्रीलिम्स रे चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन इज जस्टिस विश्वनाथ रथ ओडिशा स्टेट लॉ कमीशन या ऊपर हमें फैक्ट देखिबा एस्टैब्लिश कहा अंडर रे हेतिला वाया लॉ डिपार्टमेंट रो गोटे रेजोल्यूशन अंडर रे मार्च 16 2016 रे एस्टैब्लिश हेतिला तार पर्पस कोन टू एड्रेस स्टेट स्पेसिफिक लीगल इश्यूज स्टेट स्पेसिफिक जहां भी लीगल इश्यूज रहला लॉज ऊपर रेगुलेशंस ऊपर जहां भी लीगल इश्यूज रहला ताको एड्रेस करिवाटा आउ रेकमेंड करिवाटा धरो किछि गोटे लॉ अछि स्टेट रो लॉ अछि न्यू लॉज कोन हबा दरकार करंट सर्कमस्टेंसेस अनुसारे बा अमेंडमेंट कोन आनिबा दरकार जहां भी एक्जिस्टिंग लॉज रही छि ताको से रेकमेंड करिवो एड डिपार्टमेंट्स इन लीगल कंसल्टेशन एंड रिफॉर्म फैसिलिटेट पब्लिक इनपुट ऑन द लीगल मैटर्स की रोल कोन रही छि स्टेट रे रिव्यू करिवो लॉज को रेकमेंड भी करि परिबो कि गोटे पर्टिकुलर लॉ अछि ताको रिपील कर दिया जाऊ कि तादरे रिवीजन अना जाऊ थ्रू स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स जदि लॉ टा आउटडेटेड हे गलानी तो से जिंस से रेकमेंड करि परिबो रेकमेंडेटरी फंक्शन भी तार अछि कंडक्ट रिसर्च एंड प्रमोट लीगल अवेयरनेस एडवाइस करि परिबो ऑन लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस केमती एक्सेस करि परिबे लीगल एड आ ऊपर एडवाइस से देई परिबो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जेतबेले में ओडिशा स्टेट लॉ कमीशन पढुचे तो एटा इंपोर्टेंट कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऊपर भी किछटा नॉलेज रखिबो अबाउट व्हाट इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एटा गोटे नॉन स्टैट्यूटरी advisory body constituted by government of India one रखिबे non statutory advisory body established in 1955 and reconstituted every few years reconstituted एटी कोआ वाला non statutory statutory माने कोन statutory means permanent non statutory माने it is not permanent so it is reconstituted every few years how it established के इतला 1955 रे इतला what it aims to do it aims to recommend legal reforms to make laws more effective fair and modern composition chairperson की रहउछथि usually chairperson रहंदी supreme court judge usually retired judge रहंदी chairperson
लीगल एक्सपर्ट्स मध्ये एथरे इंक्लूडेड, एकेडमिशियंस, लॉ ऑफिसर्स मध्ये इंक्लूडेड. ये वर्क कहा अंडर करछि? इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. मिनिस्ट्री आसीगला, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स मने रखिबा बहुत इंपोर्टेंट. आई हैव मेंशनड इट अर्लियर एंड आई एम मेंशनिंग अगेन एंड अगेन. सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर आसुछि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स. फंक्शंस: review and recommend reform in existing laws. Previously discussed, जहाँ भी आउटडेटेड, ऑब्सोलेट बा रिडंडेंट लॉ रहिला तो सी रेकमेंड करि परिबो कि आको हटाई दिया जाऊ कि किछि गोटे अमेंड अणा जाऊ आ बदल रे. सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द जहाँ भी लीगल फ्रेमवर्क्स रहिला स्टेट रे बा सेंटर रे. एटा हम लॉ कमिशन ऑफ इंडिया डिस्कस करछु. तो जहाँ भी लीगल फ्रेमवर्क रहिला सेंटर रे तो ताकू केमिति आ फर्दर इंप्रूव करा जिवो. सिचुएशन चेंज होची, सर्कमस्टांसेस चेंज होची तो ताकू टाइम हिसाब रे केमिति सोडो फर्दर इंप्रूव करा जिवो, कोन कोन अमेंड्स अणा जिवो सेही लीगल फ्रेमवर्क रे ताकू से मेजर को सजेस्ट करबा. प्रमोट कोडिफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉज. विभिन्न लॉज भितर केमिति गोटे यूनिफॉर्मिटी आसीबो तो ताकू प्रमोट करबा आर गोटे फंक्शन. एनकरेज लीगल अवेयरनेस एंड एक्सेस टू जस्टिस, डिस्कस अर्लियर. एटी स्क्रीन ऊपर गोटे एनिमल देखि पारुथिबे, ऑब्जर्व इट. आर मो फीचर्स एबे डिस्क्राइब करबी. सो ऑब्जर्व दिस एनिमल. ए एनिमल टा होची इंडियन बाइजन कहउचंती याकू बा गौर और इंडियन बाइजन. एठी मु गोटे कथा कहया चाहिए, धर जेकोसी एनिमल जोथि पई कि न्यूज रे अछि तो तार आईयूसीएन स्टेटस कोठी देखा जाउची, को क्लाइमेटिक जोन रे सी बेसी देखा जाए, एगुडा नोट डाउन करबा बहुत इंपोर्टेंट. नॉट द न्यूज, इट इज द एनिमल एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एनिमल इज इंपोर्टेंट. कौन प्रोटेक्शन स्टेटस से शेयर करूची. ठीक अछि, ओके. सो न्यूज रे कोन अछि, जुलाई 10 2025 रे गोटे फीमेल गौर इंडियन बाइजन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर रे she gave birth to a healthy calf in enclosure number 42. As such, this news is not important, but what is important here that the news mentioned a species, Indian bison. So this is the first gore bath in the enclosure. एबे इंडियन बाइजन रो कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग एफर्ट्स पार्ट ऑफ एटा नेशनल जू अथॉरिटी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम रो गोटे पार्ट जोड़ा बर्थ से देइची. से ब्रीडिंग प्रोग्राम टा सेंट्रल जू अथॉरिटीज कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम रो गोटे पार्ट. एटा कोलैबोरेट कहा संगे रे करा जाइची. श्री चम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स मैसूरू, अरिग्नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई, बोंडला जू गोवा रे आंको कोलैबोरेशन रे ए एफर्ट टा निया जाइची, कंजर्वेशन एफर्ट और ब्रीडिंग एफर्ट. ओके, एबे आमे इंपोर्टेंट डिस्कस करबा अबाउट द स्पीशीज जोटा कि एग्जाम रे आसीबो, प्रीलिम स्पेसिफिक वेरी इंपोर्टेंट. अबाउट गौर और बोस गौरस, एटा तार साइंटिफिक नेम. कॉमन नेम इंडियन बाइजन. आईयूसीएन स्टेटस कोन, वल्नरेबल. हैबिटेट को हैबिटेट रे रुए, ग्रासलैंड रे रुए और डेसिडस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रे रुए. ऑप्शन एमिति पके देबो, वल्नरेबल को एंडेंजर्ड कर देबो बा हैबिटेट को चेंज करके ट्रॉपिकल बा अल्पाइन एमिति किछ गोटे दे देबो. जदी एगुडा ठीक, एगुडा पॉइंट टू पॉइंट ठीक से रिवीजन करन थिबे दी सेठी भूल हबार चांसेस बहुत अछि. सिग्निफिकेंस, लार्जेस्ट एक्सटेंट वाइल्ड कैटल स्पीशीज. एटा vital for grassland ecosystem balance as large herbivores. herbivores माने जदि grassland ecosystem रे रहिबेनी तो grasses abruptly तांकर नंबर इंक्रीज हे जिवो. तो सेटा गोटे बैलेंस प्रोवाइड करिबारे इंडियन बाइजन important in which ecosystem, in grassland ecosystem. Thirdly, plays a role in the seed dispersal and habitat maintenance. फिजिकल फीचर कोन रहउची, तांकर गोटे मस्कुलर हम्प रहउची. देखिए ये मस्कुलर हम्प रोचे, कर्व्ड हॉर्न्स कर्व्ड रोचे, लाइट कलर्ड लेग्स. नोटिस हियर एडी बॉडी टा तार ब्लैक अछि किंतु गोड़ गुडा तार कोन अछि, एठू मिड लेग रु एडी फुट जाय तार कोन अछि,
एटा लाइट कलर अच्छी क्रीम कलर अच्छी लाइट कलर्ड लेग्स एंड ब्रॉड फोरहेड रिज फोरहेड रिज टा तारा ब्रॉड रोची एठी ये जो फोरहेड रिज एठी ब्रॉड फोरहेड रिज क्वेश्चन अबाउट इंडियन गौर very important for environment prelims जहाँ भी स्पीसीज न्यूज रे आसुची से कोन पई अछि सेटा भी इम्पोर्टेंट किंतु ताठर बेसी इम्पोर्टेंट से स्पीसीज रो बैकग्राउंड तार कोन स्टेटस रहउची आईयूसीएन स्टेटस अंडर व्हिच प्रोविजन इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तार फिजिकल फीचर्स कोन रहउची को जगह रे सेटा देखा जाउची सेगुडा बहुत इम्पोर्टेंट एंड यस डू comment about this question answer kon hobo ei question ro a tree for mother campaign launched by BMC भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन करची गोटे लॉन्च करची गोटे कैंपेन रो टाइटल टा होची ए ट्री फॉर मदर कोट एटा लॉन्च हेची एट कलिंगनगर कैंपेन यूजेस मियावाकी अफोरेस्टेशन अच्छा एटा गोटे मियावाकी अफोरेस्टेशन एटा गोटे मेथड ऑफ अफोरेस्टेशन गछ लगेबार एटा गोटे मेथड तो सेटा हमें आगु डिस्कस करबा एई मेथड रे कोन हबो अफोरेस्टेशन प्रोग्राम कैरी आउट हबो ए प्लांटेशन ड्राइव रे एटा गोटे मेजर ट्री प्लांटेशन ड्राइव which is launched by BMC कोद पई जोडा अर्बन रे हीट आइलैंड इफेक्ट रोची ताकू कम्बैट करिया पई आ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को रोकिबा पई एबे कैंपेन रो ऑब्जेक्टिव और हाइलाइट्स कोन देखिबा कैंपेन रो ऑब्जेक्टिव रोची प्लांट 2 लाख ट्रीज एंड डेवलप 20 मियावाकी स्टाइल मिनी फॉरेस्ट इन भुवनेश्वर एंड सराउंडिंग एरियाज 2 लाख गछ लगेई की 20 टा मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करिवे को स्टाइल रे मियावाकी स्टाइल रे कोडी क्रिएट हबो भुवनेश्वर आउ ता आखपाख एरिया रे क्रिएट हबो 2024 रे बीएमसी कोन करतला ना 8000 ट्री सक्सेसफुली प्लांट करतला यूजिंग दिस सेम मियावाकी टेक्निक को यूज करिकी देन सेथरो इंस्पायर हे की फर्दर देन 2025 रे आकु पुनी तरे एक्सपेंड करा जाईची ए प्लांटेशन ड्राइव को केवल बीएमसी नुहे एतरे ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य इंक्लूड रही इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ द बीएमसी एंड ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एबे देखबे जो मियावाकी मेथड से माने यूज करूछथि फॉर दिस प्लांटेशन ड्राइव मियावाकी मेथड कोन इट इज डेवलप्ड बाय ए मियावाकी मेथड फर्स्ट टाइम डेवलप किए करितले ए प्लांटेशन मेथड जापानीज बॉटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी तांको ना ही एटातला से तांको ना रे ए मेथड ताकू इंप्लीमेंट करथले मेथड रो नाटा देइतिले से टेक्निक को टेक्निक रे एटा होउची डेंस नेटिव फॉरेस्ट स्टाइल प्लांटिंग ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड गोटे बड़ एरिया रे नो गोटे एरिया रे एमती स्मॉल स्मॉल पैचेस रे और जो एरिया रे पैचेस गुडा क्रिएट होउची थ्रू मियावाकी मेथड ए रीजन रे इंपोर्टेंट कि एठी नेटिव फॉरेस्ट रो ट्रीज एठी नेटिव को ट्रीज एठी मिलुची तो सेही ट्री को यूज करिकी एठी मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करिबा आ नेटिव ट्री को जेतबे यूज करा जाउची प्लांटेशन पई तो तांकर अडैप्टेबिलिटी जेहेतु से सेही रीजन रे बढ़ी चंदी तो तांकर अडैप्टेबिलिटी भी स्ट्रांग अछि से रीजन रे तो एटा इजीली क्रिएट ही परची इट फोकसेस ऑन बायोडायवर्सिटी एंड रैपिड ग्रोथ जेतबे नेटिव ट्री को नया जाउची तो सेठी जेतु से सेही रीजन रो ही बिलोंग करचंदी तो तांकर रैपिड ग्रोथ होउची रैपिड ग्रोथ माने कि से फॉरेस्ट रो रैपिड ग्रोथ सो इट आल्सो फोकसेस ऑन बायोडायवर्सिटी 2-3 year भितरे इट क्रिएट्स सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम 2-3 वर्ष भितरे माने सेल्फ सस्टेनिंग हे जिवे ऑटो मोड रे आउ तांको सेमती किछि टेक केयर दरकार नै एंड माइनर फॉरेस्ट पैचेस विल बी क्रिएटेड बेनिफिट कोन रहउची अर्बन ग्रीन कवर टू मिटिगेट urban heat island effect reduces urban heat island effect promote biodiversity ecological और cultural emphasis भी रहउची यार cultural connect कोन रहउची tree symbolized as mothers a tree for mother campaign एडी ट्री को कोन कराई छी सिंबलाइज करा जाई छी मदर हिसाब रे व्हिच इज मदर एंड नेचर कोन नर्चरिंग एंड लाइफ गिविंग एंड सो इज द नेचर ऑफ द ट्रीज नर्चरिंग एंड लाइफ गिविंग citizens encouraged to plant trees in honor of their mothers तो citizen मान को एडी एनकरेज करा जाउची ए इनिशिएटिव रा नाम अनुसार तम मदर को ऑनर करिकरी एडी ट्री प्लांटेशन रे योगदान दवा पे
Biodiversity focus, planting of diverse native tree species to support birds, insects, small animals. যেতବେଳେ ଗୋଟେ forest grow হব, mini forest हो कि large forest हो, ଏଠି ତ mini forest ର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେତବେଳେ forest grow ହବ ତ ସେତେ କ'ଣ accommodate କରିବ? Diverse native tree species to accommodate or support birds, insects and small animals. So it will promote biodiversity. Question: a tree for mother campaign launched by BMC, Miyawaki method. 4 statements are given. Accordingly, 4 options are given. So answer, do answer. Odisha to host mining expo 2026. Odisha कौन करिवो? 4th edition mining of infrastructure international expo जोटा 2026 रे हबार अछि जनवरी 8 रु 11 जाए ओडिसा को होस्ट करिवो। कोडी होस्ट करिवो? बरमुंडा ग्राउंड भुवनेश्वर। की हाइलाइट्स कौन रहउछि? एटा ऑर्गेनाइज किए करिवो? फ्यूचर एक्स ट्रेड फेयर एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आको ऑर्गेनाइज करिवो। स्केल एंड रीच 250 प्लस ग्लोबल कंपनीज एथरे पार्टिसिपेट करिवे। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 25 कंट्रीज हुए माने आसीबे, नोटेबली जर्मनी, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली एमानु एक कंट्रीज मानकर आसीकी से माने पार्टिसिपेट करिवे। पर्पस कोन रहउछि? कटिंग एज इनोवेशन को शो करिवा, नॉलेज ट्रांसफर करिवा ए कटिंग एज इनोवेशन उपरे। माइनिंग टेक्नोलॉजी आ कटिंग एज इनोवेशन कहा उपरे रहइबो? माइनिंग टेक्नोलॉजी ऊपर रहइबो। हेवी इक्विपमेंट तक केमदी हैंडल करा जिवो, केमदी फंक्शनिंग ऑफ द हेवी इक्विपमेंट्स ता ऊपर रहइबो। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस केमदी रहइबो, इलीगल माइनिंग प्रैक्टिसेस केमदी हबनी। act as a B2B, business to business networking platform. एटा माने रखिबे। एग्जाम रे जदी आसीबो B2C, this is not B2C, this is business to business. गवर्नमेंट रो पर्सपेक्टिव, हेमंत शर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जे रहले, एक्सपो अलायंस विथ द विकसित ओडिशा विजन 2036, ओडिशा विकसित ओडिशा विजन जो 2036 रहला, ए जो एक्सपोटा कंडक्ट हबो एटा अलाइन होची आ संगरे strengthens Odisha status of India's mineral hub, boost image as a preferred investment destination. तो एक्सपो थ्रू रू कोन होची? ओडिसा रो गोटे इमेज इंप्रूव होची, तो से इन्वेस्टमेंट केमिति एक्वायर करिवो, अट्रैक्ट करिवो, तो एथिरे सेडा स्ट्रेंथन होची। सो इट इज प्रिफर्ड, it boosts its image as a preferred investment destination in mining and allied sectors. ओडिशा इंडिया को सिग्निफिकेंटली क्रोमाइट, बॉक्साइट, आयरन ओर, मैंगनीज, कोल ए सब रे कंट्रीब्यूट करूची इंडिया को। ओडिशा रे बहुत रिच मिनरल रिजर्व्स रही, जेमति कि स्टील एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हेगला, जोतरे कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल, जेमति स्टील एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हेगला, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स हेगला। ओके, सो मूविंग ऑन टू ओडिशा's डेमोग्राफिक शिफ्ट, यूथ एंड माइग्रेशन। डेमोग्राफी उपरे न्यूज अछि, रेलिवेंट कोथि में? इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन इकोनॉमिक्स ପାଇଁ important for men's perspective. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रे कोन हैला? द थीम थिला एथरको empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. Theme is very important. जहाँ भी days, dates, events रोची तांकर themes, mascots, dates are very important for prelims. तो ए information टा prelims ପାଇଁ important. ओडिशा डेमोग्राफिक 2025 प्रोजेक्शन जदि फैक्ट्स आमे देखिबा तो टोटल पॉपुलेशन नियरली 4.70 करोड़। इंडिया रो रैंक 11th मोस्ट पॉपुलर स्टेट होची ओडिशा इंडिया रैंकिंग रे। यूथ पॉपुलेशन 15 to 34 इयर्स जो रहिले 34% रोची ताकर डेमोग्राफिक डिविडेंड, माने यूथ पॉपुलेशन केते 15 to 34 इयर्स मन रखिबे यूथ पॉपुलेशन दाउ कहउछदी। की कंसर्न्स एंड इश्यूज, कंसर्न्स कोन अछि एबे डेमोग्राफिक डिविडेंड रे? यूथ बल्ज, अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस। अपॉर्चुनिटी की क्राइसिस? यूथ बढ़िले कोन हबो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ रे 6.8% अछि, आ अंडर एम्प्लॉयमेंट तो 10.8% रही, which is worsening.
Large section of the youth is NEET. What is NEET? What does this keyword mean? Not in employment, education and training. से employed नाहांती कि education नो नाहांती कि कौन सी training की capacity building भी तांकर चली नहीं. The large section of the youth falls under this category, this NEET category. Growing out migration. से state छाड़ी के बाहर को पढ़ो चली, country को पढ़े लेकिन बाकी state पढ़े 1.75 million people 2020 रे 2023 रे से माने migrate करी करी पढ़े ले कोथि पाई की economic distress पाई की अनएम्प्लॉयमेंट की अंडर एम्प्लॉयमेंट की एठी चाकरी तांको जॉब वॉब मिल नथला तो से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस रे से माने माइग्रेट करी की पड़ेले फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट इनइक्वालिटी भी गोटे बड़ फैक्टर. क्लाइमेट चेंज जेमति कि रूरल लाइवलीहुड लॉस फोर्स माइग्रेशन को से इंड्यूस करूची स्पेशली अमंग द ट्राइबल्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ए माने बेसी अफेक्टेड जो माने एते भी प्रिविलेज नोंदी से माने बेसी अफेक्टेड होचंदी क्लाइमेट चेंज द्वारा तो सेटा फोर्स माइग्रेशन को भी सेटा इंड्यूस करूची. रैपिड अर्बनाइजेशन करंट अर्बनाइजेशन 17% अच्छी रैपिडली अर्बनाइजेशन होची. स्ट्रक्चरल डेफिसिट कौन रहा ह्यूमन डेवलपमेंट रे हेल्थ एजुकेशन और लाइवलीहुड रे हेल्थ परसिस्टेंट मालन्यूट्रिशन एबे भी परसिस्टेंट अच्छी स्टेट रे. आउ ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना करे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना करे एबे भी सेमिति का हेल्थ केयर फैसिलिटीज नाही एबे भी सेमिति की हेल्थ केयर फैसिलिटीज नाही कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट करा जाई परिबो सेठी. एबे भी सेठी प्री मैच्योर डेथ्स होची आ जोटा कि इजीली क्यूरेबल गोटे टाउन किबा सिटी रे सेटा सेठी इजीली क्यूरेबल नाही काहे ना सेठी डॉक्टर्स नाहांती सेठी मेडिकल फैसिलिटीज नाही. सो हेल्थ गोटे मेजर रोल प्ले करूची इन द स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट. Education is another major pillar and important pillar for human development. जेतेबेले better education नथिबो जेतेबेले public school infrastructure ही weak थिबो तो सेतेबेले better education provide करी हबनी. dropouts rate बढ़िबो पिलांकर enrollment रेट भी कमिबो तो लो एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन तो सेटा तांकर कोन करबो हैम्पर करबो जो माने भी से स्कूल रे पढिले भी तो तांकर हायर एजुकेशन को हैम्पर करबो जदी क्वालिटी एजुकेशन सेटा सेमती स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रे प्रोवाइड करा जाय नथिबो कि तांकर बेसिक स्किल्स ब्रश अप हेई नथिबो तांकर हायर एजुकेशन रे सेटा प्रभाव पकेइबो. livelihoods need for skilling linked to market demands in industrial and the service sectors. हेल्थ एजुकेशन पर आसिला इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हिसाब रे मार्केट डिमांड को अनुसार तांकर स्किलिंग आजिकली मार्केट रे एआई आसी गलानी एआई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स केते केते कोन जिंस आसी गलानी जदी लोक माने को एई सब जिंस को ने कि मार्केट रो डिमांड की ह्यूमन बीइंग्स ए सब जिंस रे जदी से माने प्रॉपर्ली इक्विप्ड थिबे ट्रेन्ड थिबे तो तांको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आजिकली का दिन रे अवेलेबल हेई परिबा. जदी से माने एथिरे तांकर ट्रेनिंग हेई नाही कैपेसिटी बिल्डिंग हेई नाही अपस्किलिंग हेई नाही तो से माने मार्केट डिमांड हिसाब रे सेटा को से माने फुलफिल करि परिबेनी. सो इट विल हैम्पर देयर लाइवलीहुड. opportunities and policy recommendation census 2027 एटा डिजिटल और कास्ट बेस्ड हबो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया offers insights of targeted welfare and policy design. Specific group को targeted welfare और policy केमिदी specific group को नहीं की तैयारी करा जीवो सेटा भी एथि प्रति insights offer करिवो. Policy needs boost inclusive skilling programs across the districts. विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे स्किलिंग अपस्किलिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एवडा सब लॉन्च हबो. रीजनली बैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बा जॉब अपॉर्चुनिटीज दिया जिवो. क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड सेटा प्रोवाइड करा जिवो सेतिरे फोकस करा जिवो. पब्लिक एजुकेशन जो रहला बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एजुकेशन एगुड़ा सब प्रोवाइड करा जिवो टू स्ट्रेंथन द पब्लिक एजुकेशन. आ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जिवो जो माने एजुकेशन जो माने कर सॉरी थी कि जो माने जॉब सीकिंग तांको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जिवो ताकि कि से माने मार्केट डिमांड हिसाब रे अन्य मानक संगे कंपीट करि परिबे. इको वर्क्स मिनी फॉरेस्ट इनिशिएटिव
गोटे इनिशिएटिव चली बालेश्वर ओडिशा रे जोटा कि रेलिवेंट फॉर GS3 एनवायरनमेंट फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस। आर कॉन्टेक्स्ट कोन एटा 76 वन महोत्सव वीक जोटा हेतला गोटे ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल जोटा कहउछथि वन महोत्सव वीक को जोटा कि डिले हैला ड्यू टू रेन्स एटा तार गोटे पार्ट लॉन्च हेछि अनु अंगुल कचेरी पड़िया महुमोहन पंचायत 16 ब्लॉक बालेश्वर रे। हाइलाइट्स कोन ऑर्गेनाइज किए कोछि इको वर्क एटा गोटे क्लाइमेट एक्शन मूवमेंट कहा संगे कोलैबोरेशन करिकि रोसिया गोटे लोकल एनजीओ आ संगे इको वर्क कोलैबोरेशन करिकि एटा को लॉन्च हेछि इको वर्क्स मिनी फॉरेस्ट इनिशिएटिव। आवर ऑब्जेक्टिव कोन टू एस्टैब्लिश मिनी फॉरेस्ट्स पंचायत लेवल रे छोटो छोटो फॉरेस्ट्स क्रिएट करबा आ छोटो छोटो फॉरेस्ट कोन करिवे बायोडायवर्सिटी रिच जोन फॉरेस्ट क्रिएट करबा it will be as a habitat, it will provide habitat for कोन small animals birds organisms तो biodiversity rich zone से provide करिवो। local carbon sink जो trees रहिले forest मान करे से माने कोन करंदी carbon sink हिसाब रे काम करंदी by sequestering carbon through sequestering carbon dioxide from the atmosphere। promote eco education for school children and villagers। स्कूल चिल्ड्रेन और विलेजर जो माने रहिले तांको भितरे इको एजुकेशन प्रमोट करिवो। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स केमिति इम्प्लीमेंटेशन हबो फेज बाय फेज एटा इम्प्लीमेंट हबो डायरेक्टली नो। फेज 1 प्लांटेशन रे 100 टा नेटिव ट्री स्पीसीज लागिवे फर्स्ट नेटिव ट्री स्पीसीज लागिवे। लॉन्ग टर्म गोल रही छी 5000 चारा लगेबाकू 150 प्लस इंडिजिनियस स्पीसीज। Community participation, active involvement of students from the Angula Government School and the Krishna Chandra UP School। community participation रही को मानकर students मानकर टीचर मानकर local villagers मानकर community participation through रु एटा कोन हबो ए मिनी फॉरेस्ट इनिशिएटिव टा मिनी फॉरेस्ट इनिशिएटिव कैरी आउट हबो। स्लोगन अडॉप्ट करछन स्टूडेंट माने स्लोगन कोन रोची प्लांट वन ट्री फॉर मदर अर्थ। सिग्निफिकेंस कोन रोची ग्रास रूट अप्रोच टू क्लाइमेट रेजिलियंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। क्लाइमेट रेजिलियंस प्रमोट करूची कम्युनिटी अवेयरनेस प्रमोट करूची कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू रे सपोर्ट गोल 3 क्लाइमेट एक्शन एंड द गोल 15 लाइफ ऑन लैंड यूनाइटेड नेशन एसडीजीज। गोल 13 जो रोची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो जोटा डील करछि क्लाइमेट एक्शन संगे गोल 15 जोटा डील करछि लाइफ ऑन लैंड संगे जोटा कि लाइफ ऑन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को ऊपर तो ता संगे ए मिशन टा इनिशिएटिव टा अलाइन हे परछि। एठी मु गोटे एठी प्रोवाइड करिछि जोथरे कि 17 टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहिछि आपको भल से मन रखी देथिबे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जेमति नो पॉवर्टी 2 जीरो हंगर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग 4 क्वालिटी एजुकेशन 5 जेंडर इक्वालिटी एटा रहिला 17 टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि। अकॉर्डिंगली मेमोराइज ऑल दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ एबे हम पढ़बा आषाढ़ी फेस्टिवल व्हेन मां तारिणी फास्ट फॉर डिवोटीज। GS1 आर्ट एंड कल्चर प्रिलिम्स पाई इंपोर्टेंट मेंस पाई इंपोर्टेंट एटा नुहे। आर हाइलाइट्स कोन आषाढ़ी पर्वटा कोन एटा गोटे मेजर फेस्टिवल जोथरे कि जोटा कि घटगा मां तारिणी को टेंपल रे एटा सेलिब्रेट होय जोटा कि कुआ जाए फेस्टिवल ऑफ फार्मिंग भी आकु कुआ जाए। आ एथरे हुए कोन इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन ओडिशा। सेलिब्रेट केबे हुए आषाढ़ मासर लास्ट दिन रे एटा सेलिब्रेट हुए। एटा यूनिक गोटे रिलीजियस बिलीव एटा कि ए दिन कौन हुए कि मां तारिणी जो थांती सी कौन करती पूरा दिन फास्टिंग करती कोथि कि वेलबिंग ऑफ द वर्ल्ड पूरा दुनिया पाई तांको भक्त मान पाई से फास्टिंग करती। सुना बेस गोल्डन अटायर रिचुअल भी गोटे रही। इवनिंग रे कौन हुए मां तारिणी को गोल्ड ऑर्नामेंट्स रे सजा जाए ताकू सुना बेस कहउचंती आषाढ़ी फेस्टिवल रो। Moving on to next news, Talcher Rourkela among 10 most polluted Indian cities। GS paper 3 environment prelims mains by important both for prelims and mains। top polluted cities India रे जो January to June जो सर्वे टा कंडक्ट हेतला as per Center for Research on Energy and Clean Air
क्रिया फर्स्ट आसाम मेघालय बॉर्डर रो गोटे सिटी अछि जो थरे कि PM 2.5 मात्राटा बहुत अधिका अछि 133 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर अछि। सेकेंड रही छी दिल्ली, दिस इज इंपोर्टेंट फर्स्ट किए सेकेंड किए एई नंबरटा एते इंपोर्टेंट नुहे अदर्स टॉप 10 रे जो रहिले ता भितरे ओडिसा रे ओडिसा रु दीटा जगह अछि गोटे तालचेर गोटे राउरकेला। क्लीनेस्ट सिटी कहा मिली अवार्ड आइजॉल मिजोरम। तो ओडिसा रो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स तालचेर और राउरकेला ये फीचर हेले कोथ में फीचर हेले एटी कोन अछि एमिति कि से माने फीचर हेले आउ कोनसी सिटी फीचर हेलानी एटी थर्मल पावर प्लांट्स अछि ड्यू टू देयर थर्मल पावर प्लांट्स रु जो इंडस्ट्रियल एमिशंस होची जो पोल्यूशन बाहरुची स्टील प्लांट कोल प्लांट रु हाई वेहिकुलर एंड द डस्ट पोल्यूशन सिटीज ऑब्वियसली वेहिकुलर और डस्ट पोल्यूशन तो रहू ही थिबो। तो नेशनल फाइंडिंग्स रे एटा कोन देखा जाय कि 239 सिटीज को नेकी डाटा बाहरी थिला विथ CAQMS एटा एनालाइज हेतिला 122 सिटीज एक्सीडेड द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नाक्स रो जो स्टैंडर्ड रही कि एयर क्वालिटी टा कहा भीतर रहया दरकार केति कि रहया दरकार 122 सिटीज अमंग द 239 सिटीज गोटे एते बड़ मात्रा रे से माने कोन करे ना एक्सीड करि गले इट मींस द कंडीशन इज रियली बैड एंड पुअर द एयर क्वालिटी इज रियली पुअर। नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एटा कोन एबे हमें मेंशन करथिले तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि आ ऊपर भी इंफॉर्मेशन जानिथिबा इशुइंग अथॉरिटी सेट बाय एटा को एस्टैब्लिश किए करथिले ए स्टैंडर्ड को सेट बाय सेंट्रल CPCB जो रहला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी एटा को सेट करिछि ए स्टैंडर्ड को नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड को अंडर व्हिच मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज based on what based on co-act under it set ହେଇଛି standard air prevention and control of pollution act 1981 or air act 1981 purpose of NAC ର purpose कोन public health और environment को protect करिबा by providing a standard की air quality एतिकी रहया दरकार एतिकी pollutants एमिति तांकर standard तांकर level through public health और environment को protect करिबा provide legal limits for air pollutants and that are considered harmful जो गुड़ा harmful air pollutants रोची जेंति कि PM 2.5 रहला PM 10 रहला PM 2.5 PM 10 PM माने कोन particulate matter तो तांकर गुड़े legal limit set करिबा जो harmful pollutants रहिले आउ ये को 12टा pollutants को ये स्टैंडर्ड लीगल लिमिट प्रोवाइड करे आ ये 12टा जाको मेमोराइज हेई जिबा दरकार। फर्स्ट PM 10 PM 2.5 सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन एमोनिया लेड बेंजीन बेंजोपाइरिन आर्सेनिक निकेल 12टा हेई गले। मेन सोर्स PM 2.5 पोल्यूशन विषय कुआ जाउची as per प्राण एंड IIT दिल्ली स्टडीज हिसाब रे PM 2.5 रो मेन सोर्सेस कोन रहला ट्रांसपोर्ट रु आसुची वेहिकुलर एमिशन रु 17 to 28% आसुची डस्ट रु आसुची रोड कंस्ट्रक्शन डस्ट रु 17 to 38% इंडस्ट्रियल पावर प्लांट रु आसुची 22 to 30% रेसिडेंशियल कंबशन रु आसुची घरे जोड़ा वुड चारकोल जळा होची 8 to 10% सेटु आसुची जोड़ा क्रॉप बर्निंग बा स्टबल बर्निंग कहउचंदी 4 to 7% सेटु आसुची पॉलिसी इनसाइट्स कोन आकु नै की focusing only on vehicles ignores industrial and residential sources जदि खाली आमे vehicular emission ऊपर फोकस करबा ताले इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल सोर्स रु इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल सोर्स रु त एटी केते मात्रा 20 to 30% एटी रेसिडेंशियल कंबशन देखंतु 8 to 10% रहउची तो एटा इग्नोर हे जाउची जो गोटे मेजर फ्रैक्शन होल्ड करूची। तालचेर राउरकेला नीड मल्टी सेक्टरल पोल्यूशन एंड कंट्रोल प्लान्स जेहेतु तालचेर राउरकेला इंडस्ट्रियल आउ vehicular emission बहुत बेसी मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन पोल्यूशन कंट्रोल प्लान्स बहुत इंपोर्टेंट highlighting the need for stronger enforcement of air quality regulation in industrial towns air quality regulation रा enforcement strong हवा दरकार punishments भी मिलिया दरकार for breaching the standards and qualities। last current affairs of the day last
न्यूज कौन कही पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट लॉन्च्ड इन ओडिशा जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस relevant for both prelims and mains. Health and Family Welfare Minister मुकेश महालिंग से एटा को लॉन्च करछथि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट केबे लॉन्च हला एटा जुलाई 11 2025 रे लॉन्च हेछि एमिंग टू प्रमोट सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टैटिस्टिक्स कोन रहउछि ओडिसा रा एवरेज फर्टिलिटी रेट एटा डिक्रीज हेछि ड्रॉप हेछि इंक्रीज जदी एग्जाम रे देइथिबो सेटा को इनकरेक्ट मार्क करबे एटा एक्चुअली ड्रॉप हेछि टू 1.8 चिल्ड्रन पर कपल बिलो द नेशनल एवरेज एंड रिप्लेसमेंट लेवल नेशनली कोन चलछि 2.1 चलछि ओडिसा रे ड्रॉप हेछि फर्टिलिटी रेट 1.8 रखिबे ओडिसा पई नेशनली नेशनल कथा कहले मन रखिबे 2.1 The unmet need for family planning decreased significantly from 13% to 7%. तो फैमिली प्लानिंग रो जो नीड ता थिला सेटा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हेछि फ्रॉम 13 टू 7.2%. सिग्निफिकेंस कोन रहछि कैंपेन रो सिग्निफिकेंस होछि ये फैमिली वेलफेयर ऊपर फोकस करछि जेंडर इक्वालिटी ऊपर फोकस करछि मैटरनल हेल्थ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो रहले ताकर मैटरनल हेल्थ ऊपर फोकस करछि और ह्यूमन राइट्स ऊपर फोकस करछि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा वाइटल कोथि पई कि गोटे हेल्दी प्रॉस्परस सोसाइटी बिल्ड करिया पई कि आउ रिड्यूस कोन करूछि एतरे डेवलपमेंटल बर्डन्स कॉज्ड बाय रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इम्प्लीमेंटेशन टा कहा द्वारा होछि सक्सेस क्रेडिटेड टू स्ट्रांग नेटवर्क ऑफ ए जो सक्सेस टा मिली छी एटा क्रेडिट दिया जाउछि जो आशा वर्कर्स रहिले जो से माने अवेयरनेस स्प्रेड करूछंती आशा वर्कर्स वॉलंटियर्स जो माने हेल्थ और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दउछंती से माने को क्रेडिट टा दिया जाई छी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अवार्डेड टू फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स नर्सेस फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस कंसर्न्स भी किछिटा रहउछि एथरे जेमति कि मिनिस्टर हाइलाइट करिसंती गुड प्रॉब्लम जेमति कि चाइल्ड मैरिज एबे भी गोटे कंसर्न इलीगल एंड लिंक्ड टू अर्ली मदरहुड रिस्क एटा भी गोटे कंसर्न जोटा कि मैटरनल हेल्थ को हैम्पर करे किछिटा कंसर्न भितरु एगुडा भी मिनिस्टर को द्वारा रेज करा जायछि एम्फसाइज्ड बर्थ स्पेसिंग फर्स्ट सिबलिंग और सेकंड सिबलिंग भीतर एज गैप केते रहया दरकार बर्थ स्पेसिंग ता ऊपर एम्फसाइज करा जायछि एजुकेशनल आउटरीच फॉर इंप्रूव्ड मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ ऊपर एजुकेशनल आउटरीच प्रोवाइडिंग एजुकेशन अवेयरनेस आ ऊपर मध्ये एम्फसाइज दिया जायछि एटा लॉन्च केबे हेतिला लॉन्च ड्यूरिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th जुलाई 2025 रे लॉन्च हेतिला कैंपेन रन्स अंटिल जुलाई 24 जुलाई 24 जाए कैंपेन टा चलिबो ओडिसा एथरे गोटे एग्जांपल सेट करछि इन कोन पॉपुलेशन मैनेजमेंट थ्रू अवेयरनेस कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जदि मेंशन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऊपर ब्रीफली टिके देखि देबा फैक्ट्स कोन रहिछि केबे एटा ऑब्जर्व होछि केबे एटा सेलिब्रेट होछि जुलाई 11th रे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एटा कोन कर इट रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन जदा जहां भी विश्व सारा जहां पॉपुलेशन इश्यूज रहिला ह्यूमन डेवलपमेंट ऊपर एंड देयर इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर ऊपर पॉपुलेशन रे इश्यूज कोन रहिछि पॉपुलेशन बढ़िले ए सब फैक्टर्स ए सब सेक्टर्स ऊपर डेवलपमेंट सेक्टर एनवायरनमेंट सेक्टर ह्यूमन वेलफेयर सेक्टर आको ऊपर कोन कोन सब प्रभाव पकेबो ता ऊपर अवेयरनेस जनरेट करे 2025 रो थीम कोन थिला theme for 2025 is empowering young people to create families they want in a fair and hopeful world focusing on youth empowerment and reproductive rights okay so आउ गोटे न्यूज अछि एठी मु भाबली सेटा लास्ट बोली this is the last 1 second yes this is the last current affairs of the day so why it is in news and what is in news re kon kahi state led to lead India's green hydrogen transition green hydrogen again renewable energy environment sector of the GS3 both
relevant for prelims and mains. News रे कौन पाई अछि? Odisha is poised to lead India's green hydrogen revolution. Green hydrogen revolution को in Odisha lead करिवो बा pioneer करिवो. Ministry of Renewable Resources Secretary Santosh Kumar Sadangi and Odisha रा Chief Secretary Manoj Ahuja या को रिव्यू करछथि आर प्रोग्रेस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन संगे आर प्रोग्रेस कोन रही छै. आउ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्टेट आ अंडर रे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करूची फॉर ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स लाइक ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मिथेनॉल. हाइड्रोजन कलर कोडिंग हिसाब रे डिफरेंट टाइप्स रो थाए. फर्स्ट होची गोटे ग्रीन हाइड्रोजन थाए, ब्लू हाइड्रोजन थाए, ग्रे हाइड्रोजन थाए, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, रेड बा व्हाइट हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन कोन हैला जोटा को थ्रू प्रोड्यूस होची वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू प्रोड्यूस होची. आउ रिन्यूएबल एनर्जी रे एडा काम रे आसुची. एटा को ग्रीन एथिबे को जाउची काइना इथरे कोनोसी भी CO2 एमिशन हो नाही. देयर इज नो CO2 एमिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. वाटर इलेक्ट्रोलिसिस टा गोटे कोन एटा इलेक्ट्रिसिटी यूज करे टू डिकम्पोज वाटर टाको H2O टाको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रे डिकम्पोज करिया को. ब्लू हाइड्रोजन कोन एटा फॉसिल फ्यूल रो सोर्स होची. CO2 टा कैप्चर होची आ अंडरग्राउंड रे स्टोर कर दिया जाउची. ब्रीफली मु आको विषय टिके टिके कहूची. एटा को रीड आउट करि परिबे जेतबेले पीडीएफ प्रोवाइड हेइ जिवो कमेंट सेक्शन रे. ग्रे हाइड्रोजन कोन एटा प्रोड्यूस होची फॉसिल फ्यूल रो. आ कॉमनली एटा यूज हुए स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग. एटा एई टेक्नोलॉजी रो एई मेथड टा को यूज करनदे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग. ड्यूरिंग एई प्रोसेस रे कोन हुए CO2 इज प्रोड्यूस्ड एंड इवेंचुअली रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर. एथरे CO2 प्रोड्यूस होची. ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कोन एटा कोल रो प्रोड्यूस होची. ब्लैक और ब्राउन कलर कोल रो प्रोड्यूस होला पर ब्लैक और ब्राउन कलर टा केमिति आसुची टाइप ऊपर डिपेंड करची. कोल रो टाइप ऊपर बिटुमिनस रे ब्लैक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची और लिग्नाइट रे ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची. CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड एतरे रिलीज होची. टर्कोइज हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ मीथेन रो थर्मल स्प्लिटिंग द्वारा भाया मीथेन पायरोलिसिस थर्मल स्प्लिटिंग जेतले होची टर्कोइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची. ए प्रोडक्शन रे कार्बन सॉलिड फॉर्म रे रिमूव होई थाए इंस्टेड ऑफ CO2 गैस. एटा गोटे यूनिक फीचर. रिमेंबर दिस. पर्पल हाइड्रोजन कोन मेड यूजिंग न्यूक्लियर पावर एंड हीट थ्रू कंबाइंड केमोथर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस स्प्लिटिंग वाटर. न्यूक्लियर पावर एतरे यूज होची. पिंक हाइड्रोजन केमिति जनरेट होची थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. यूज कोन करिकी by using electricity from nuclear power plant ru electricity use करके जेतबेले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होची सेतबेले पिंक हाइड्रोजन क्रिएट होची. रेड हाइड्रोजन केतबेले क्रिएट होची जेतबेले वाटर रो कैटालिटिक स्प्लिटिंग होची इन अ हाई टेम्परेचर सेतबेले रेड हाइड्रोजन क्रिएट होची यूजिंग न्यूक्लियर पावर थर्मल एज एन एनर्जी सोर्स. व्हाइट हाइड्रोजन कोन व्हाइट हाइड्रोजन जोटा कि नेचुरली जो हाइड्रोजन टा एटमॉस्फेयर रे देखा जाउची सेटा को व्हाइट हाइड्रोजन कहउचंती. स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ए जो इनिशिएटिव टा एबे ओडिसा जो जॉइन करिवो लीड करिवो इंडिया रो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन को स्ट्रैटेजिक लीडरशिप विषय जदि हमें देखिबा ओडिसा गवर्नमेंट से कमिट करिछि गोटे ग्लोबल हब हवा पई ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन आउ एक्सपोर्ट रे. एटा लॉन्ग टर्म विजन रहउछि कि से गोटे स्टेट गोटे ग्लोबल हब हबो. फोकस रहउछि इन एनेबलिंग कोलैबोरेटिव investment ecosystem through policy reform. SEZ infrastructure SEZ माने कोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो रहउची ताकर सेतिरे हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ता सेतिरो ता थ्रू रे हबो. कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम रे पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आउ ए सब स्टेप नै कि ओडिसा गवर्नमेंट कोन विजन रखिछि गोटे ग्लोबल हब हवा पई. एडवांटेजेस कोन हबो ए जिंसडा हे गले स्ट्रैटेजिक कोस्टल लोकेशन नियर पारादीप एंड गोपालपुर पोर्ट एटा तार गोटे एडवांटेज.
ओडिशा आज लीड जो करि पारि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेथिरे ओडिशार जो स्ट्राटेजिक लोकेशन टा रोची तार पारादीप और गोपालपुर पोर्ट फॉर एग्जांपल जेमती कि हेई गला सेटा गोटे मेजर एडवांटेज प्रोवाइड करछंती स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और पॉलिसी रेडीनेस फॉर क्लीन एनर्जी रोची आ गोपालपुर रे स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोटे ईयर मार्क हेकी अछि जोटा कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट पे यूज करा जिवो ग्लोबल आउ डोमेस्टिक इन्वेस्टर मानक ठारू जो इंटरेस्ट आसुची फेवरेबल कंडीशन अंडर रे सेगुडा फर्दर इन्वेस्ट होची इन दीज प्रोजेक्ट्स चैलेंजेस कोन रही सब जिनसर प्रोज अच्छी आउ कॉन्स अच्छी तो ए जिनस चैलेंज कोन रही वाटर अवेलेबिलिटी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रीवियसली से टेबल रे देखले कि जिते बळे भी हाइड्रोजन क्रिएट होची बा प्रोड्यूस होची जे कोनोसी मेथड थ्रू वाटर यूज होची तो वाटर अवेलेबिलिटी गोटे चैलेंज आ वंस एनर्जी प्रोड्यूस हे गला जो लार्ज स्केल एनर्जी प्रोड्यूस हम से ग्रिड रे से माने स्टोर केमती करिवे तो एटा इंटीग्रेट केमती हो सो इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी इनटू द ग्रिड द स्टोरेज इज अ चैलेंज infrastructure of storage system challenge after the production of renewable energy regulatory और financial hurdles भी रोचे project रा execution रे green energy expansion rooftop solar push district collectors जो माने रहिले DMs रहिले जो माने district magistrates से माने installation पाई डायरेक्ट करछन कि जल्दी जल्दी इंस्टॉलेशन हो ताकि स्पेशली फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स फॉर रूफटॉप सोलर पुश अडॉप्शन ऑफ यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन यूएलए मॉडल कोऑर्डिनेशन एम्फसाइज भी रहउची रेगुलर एसएलबीसी मीटिंग्स एक्टिव एंगेजमेंट विद द वेंडर्स बैंकर्स एंड क्विक लोन सैंक्शंस एंड डिस्बर्सल्स वे फॉरवर्ड कोन फर्दर ओडिशा तार पोजीशन केमती स्ट्रेंथन करि परिबो गोटे डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आनिले ओडिशा पई कि जोडा कि अलाइन करूथिबा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन गोल संगे सेकंड वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो वाटर स्कार्सिटी सॉल्यूशन रोची वाटर यूजेज सॉल्यूशन रोची डिसैलाइनेशन सॉल्यूशन रो जो प्रॉब्लम रोची कोस्टल जोन्स रे तो तारो मैनेजमेंट सॉल्यूशन वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन जदी अणा हबो आ ता वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन रे इन्वेस्ट करा गले तो सेटा गोटे वे फॉरवर्ड रहिबो 3 पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट हब्स एट पारादीप एंड गोपालपुर एसीजेड जेमती हमें देखले गोपालपुर रे एसीजेड जोटा ईयर मार्क कराई छी पोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट हब जदी प्रमोट करा जिवो then it will provide a solution a way forward strengthen infrastructure and grid connectivity for power storage renewable energy integration fine fifth launch skilling research and development academic partnership in the green hydrogen जो further advanced technologies रहिला वर्कर्स बा अन्य मानकु सेतरे स्किलिंग अपस्किलिंग बा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर फर्दर यूसेज and advantages our academic partnership rosi for knowledge sharing lastly ensure community participation environmental safeguards and policy support ए सब fruitless जदी policy support environmental safeguard हिसाब रे काम करिवेनी कि community participation नथिबो so community participation environmental safeguard according to environmental impact assessment आ policy support जदी रहिबो ताहले Odisha will pioneer in India's green hydrogen transition successfully. Okay, that is it for today. टिके लंबा थिला सेशन टा बहुत गुडे करंट अफेयर्स थिला कवर करिया को जहा जहा मु क्वेश्चंस देली ताको कमेंट सेक्शन रे तार आंसर्स देइथिबे आ सेशन टी को भल से देखिथिबे आ जो माने लाइव अटेंड करनांती ताको रिकॉर्डेड देखिबे and I insist do attempt the questions bhul ho pache and in the next session I will discuss the MCQs first then I will proceed with next week's current affairs. Thank you.